Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Chalo, come on. Done with time pass. Let's get back to work. So we are done. We are ready. So, friends, I strongly believe that you had a good Sunday and spent some quality time. Apart from just time pass, I think you also have spent some time on revising and going through what all have been done in last 1 week for different subjects. What CA Inter is all about. That feel also would have definitely come and would have realized that there is a lot more work to be done. Did you realize that at least? या ये लगा यार कुछ भी नहीं है, ये फाउंडेशन से भी इजी है? ऐसा कुछ लगा क्या फाउंडेशन से भी बहुत इजी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता बॉस. कहानी बहुत आगे बहुत बाकी है. फाइनल में जब आएंगे तो आदत हो गया है. डोंट वरी. क्लियर? Shall we start? Everybody. Yeah, come on, let's begin, my dear friends. So, friends, we were discussing the concept of basic concepts. Lot of points were done in that, but just few small points are left out in that topic, which we'll discuss today and close with the topic of basic concepts. Then we'll also start discussion about residential status. Are we ready? Everyone? Good. Bola beta, what are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. 100% ये एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है? What are the 5 sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. बराबर है बेटा? Now, circulars and notifications who will frame? CBTT. Central Board of Income Tax Act 1961 came into force on which date? 1st April 1960. बराबर है बेटा? Excellent. Then, my dear friends, tell me, what is section 231? Person. Person includes individual, HUF, firm, LLP, companies, AOP, BOI, AJP, local authority. बराबर है बेटा? Good. What is section 27, my dear friends? Assessee means every person who is liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of any other person in respect of which he is assessable, or loss sustained by him or such other person, or refund due to him or such other person. Second point, every person who is deemed to be an assessee. Last point, assessee in default. Assessee in default covers 3 cases. Person who has not paid tax or not paid advance tax. Number 2, person who has not done TDS. Number 3, person who has done TDS but not paid to government. Barabar? Excellent. Tell me guys, what is section 4? Good, full reverse karke aaya yaar. Brilliant. What is charitable section? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. Previous year, which section defined? 234 and section. Previous year is the year in which income is assessment year. Which section? Year in which previous year income is chargeable to tax. What is 28? Assessment is the procedure by which income of an assessee is assessed by the assessing officer. Assessee, assessing officer, assessment. समझ में आया ना बेटा? Good. What is section 225A? India covers territory, territorial waters, seabed, subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone, airspace about territory and territorial waters. बराबर है? बोलना भाई. What is section 210? Oh my God, no बेटा. पढ़ा मैंने आपको ये. लिखा है भी. Average tax नहीं, average rate of tax. Total tax divided by total income into 100. यार लिखे ना बेटा. टमाटर कब लिखे सर? लास्ट क्लास में लिखे सर. कहाँ पे लिखे थे सर? एक क्वेश्चन में आया था सर. क्वेश्चन नंबर 6 में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में आया था. मिल गया? अरे बोलो ना भाई. अभी 27 क्या है? assessee. 28, 29,
210 average rate of tax. बेटा क्या हुआ? What is average rate of tax? Total tax divided by total income into 100. बोलो what is average rate of tax? Total tax divided by total income into 100. 28, 225A, 210. Assessment average rate of tax. ये क्या है भाई? 210 is what? Average rate of tax. What is average rate of tax? Total tax divided by total income into 100. दोस्तों बोलना बेटा. Good. What is section 229C? Maximum marginal rate, highest rate of income tax, 30% plus surcharge at 37% plus HEC 4%. दोस्तों बराबर है? Effectively 42.74%. बराबर है? Excellent. Then my dear friends, what is the answer for section 4? How many exceptions are there? Numbers बोलो सिर्फ. Come on, tell me the content. Shipping business of non-resident persons leaving India. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Persons likely to transfer property to avoid tax. Discontinued business. बराबर है? Oh. What is section 87A? For whom? Only for resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. कितना बेटा rebate? Tax payable or 12,500. Whichever is wonderful. मेरे expression देखे आगे मत बोलो. Whichever is lower. Good. What is section 288A? 288B, 80GGB, company to political party, 80GGC, other than company to political party. कितना मिलेगा डिडक्शन? जितना डोनेट करेंगे उतना मिलेगा, बट नो कैश. कैश है तो भाई भूल जा, नॉन कैश. बराबर है ना? वंडरफुल. व्हाट इज सेक्शन 80 T A, interest on savings bank account for non-senior citizen. कितना बेटा डिडक्शन? Interest or 10,000, whichever is lower. Those बराबर है? Good बेटा. 80 TTB, interest on savings bank and fixed deposit for senior citizen. कितना बेटा डिडक्शन? Interest or 50,000, whichever is lower. बराबर है ना? भाई सीनियर है तो ज्यादा बेनिफिट दे रहे, नॉन सीनियर है 10,000 ले ले बस, खुश. जो मिलेगा उसमें खुश. 112 जनरल रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. कितना बेटा? 20%. बराबर है ना? नेक्स्ट आंसर आई वांट परफेक्ट सिंक मैन. 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding. Same case short term 111A, 15%. 1 rupee पे भी आएगा. 1 lakh वाला कहानी कुछ भी नहीं. And do we remember what is the meaning of this word called equity oriented mutual fund? अगर डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में लगाए तो मिनिमम 65%. भाई तू फंड है तो दूसरा फंड में लगाना चाह रहा है 90, वो फंड वापस. Exactly. Then that is called equity oriented fund. If that percentage is not satisfied, it become a debt oriented fund. If it is debt oriented fund, this section will not apply. सबको clear है? Good beta. Then what is section 115 BB? BBE. Unexplained incomes, investments, expenditure. Tax at what rate? Flat 60%. Surcharge 25%. Cess effective rate. Exactly. Clear with that point, everybody? Good. Chalo guys. What is the tax rate for partnership firm? Flat 30%. Tax for partnership firm. Oh my God. LLP. Oh my God. Cooperative society.
up to 10,000, 10%. 10,000 to 20,000, 20%. Above 20,000, 30%. बराबर है? Very good. HUF. Normal category. याद है ना बेटा? HUF, AOP, BOI, AJP. All under normal category only. Only AOP? Consisting of companies. उनके लिए सरचार्ज का फर्क पड़ता है ना, रेट तो वही है ना यार, सरचार्ज का फर्क है बट स्लैब रेट्स तो वही है ना दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन्स बर्थडे इज ऑन 1st April, व्हाट विल यू ट्रीट? 1 day preceding. और बोलेंगे भाई एंजॉय कर. एंड लॉजिकली दैट पॉइंट मेक्स ओनली सेंस फॉर somebody whose 60th birthday is on 1st April और 80th birthday is on 1st April. अपने लिए क्या फर्क पड़ेगा यार? अपने को नॉर्मल मतलब सीनियर बनने के लिए बहुत टाइम है अभी यार. बोलना बेटा, ये क्लास में ये बड़ा प्रॉब्लम है यार. ये डोर ओपन करते बस सबका ध्यान कहीं और जा रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग है तो और ज्यादा देर देख रहे. सेट करो भाई. चलो, कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी? डन. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल्स? Up to 2.5 lakh. Hey, up to 50 lakhs? No surcharge. Next. Above 50 lakh but does not exceed 1 crore. कितना है? 10%. More than 1 crore does not exceed 2 crores. 15%. More than 2 crores does not exceed 5 crores. 25%. More than 5 crores. But in third point, fourth point, it is excluding dividend income. कैपिटल गेन्स अंडर 112, 112A, 111A. ये चारों के लिए मैक्सिमम रेट कितना है? बराबर है ना? याद है ना बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टेल मी, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज फॉर पार्टनरशिप फर्म्स? सरचार्ज पूछा मैंने. व्हेन? कब आएगा? वही तो क्वेश्चन है ना. व्हेन टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 crore, तभी आएगा 12% सरचार्ज. यार बोलना बेटा. Friends, getting clarity? Good question. What is the rate of surcharge for a cooperative society? Greater than 1 crore? Does not exceed 10 crores. कितना? 7%. Greater than 10 crores. Exactly. Are we clear with all these points? चलो बेटा. Friends, छोटे छोटे small points pending है ये topic में. We'll discuss that small points pending in this topic and close with this topic. Are we ready? And if time permits, at the end we will start residential status also. At the end, if time permits. Clear? Sure. So friends, I taught you tax rates for every kind of person, but we are just pending with one category of person, that is your company. Company is a kind of organization. Who regulates a company? Companies Act. Oh my God. Companies Act has given a law for the company. But my question to you was, who regulates a company? SEBI. अच्छा, expert को SEBI control कर रहे हैं. MCA, wonderful answer. There's one department known as Ministry of Corporate Affairs. Basically what has done is, government has given the power to Ministry of Corporate Affairs. That is only called subordinate legislation, where they gave power to MCA to regulate the companies. SEBI will monitor only for listed companies, not every company. So you heard MCA? What is MCA? Exactly. They basically monitor and control the companies. And if something goes wrong, they will take serious course of actions. And companies, such company registered under existing law or under any other previous law. सुने earlier law सुने आप लोग? Previous law. Okay, fine. Whatever. What was the previous law? Which year? 1965. Oh, 56. अरे क्या मेरे भाई उल्टा कर रहा क्या यार? Income tax act which year? तो उसको 16 मत कर प्लीज. नेक्स्ट, लेटेस्ट कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013. ये पता है ना अपने को? ठीक है, चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर कंपनी. थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनो प्लीज. इन केस ऑफ ए कंपनी, they divide into two categories, boss.
That is, in case of a company, generally 30%. बट एक स्पेशल केस है जो मैक्सिमम लोग स्पेशल केस में आते, जो मैक्सिमम लोग स्पेशल केस में आएंगे. What is the special case? Let me discuss. Wait for 2 minutes. If, say, we're talking about which assessment year? 23. ये तो पता है ना अपने को. For our exam, it is AY 23, 24, PY 22, 23, and the year in which you write exam, that year's budget not applicable. So for you, Finance Act 22 will apply. इतना तो clarity है ना अपने को? बोलो ना बेटा. Then come on. So generally, what is the rate? बोलो यार. But if turnover, so did I write the word total income? What is the word I wrote? Turnover, total income दोनों फर्क है ना बेटा? Turnover का मतलब क्या है? Turnover means sales. Total income is your income and after all your expenses, something like your net profit in accounting language, GP, NP. Exactly. Come on, listen. Generally, what is the tax rate? 30%. But if turnover during previous year 1920, during previous year 1920, during previous year which year? 1920, does not exceed 400 crores. 400, then the tax rate is 25%. That is why I told you that generally majority of the companies fit in this category, where they pay tax at the rate of 25% but not at the rate of 30%. दोस्त समझ में आ रहा है क्या? And one crazy point here, to check the tax rate, I repeat again, to check the tax rate for AY 23-24, they took which previous year as base? Which previous year they took as base? 1920. They took 1920 as base and told if 1920 turnover is not more than 400 crores, then we'll apply 25% tax rate. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों बोलो ना यार. Now one doubt will come before anything. Before I talk anything, first doubt they'll get is 30-25. ये तो समझ में आया, पर हमको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 1920 क्यों लिए. ये तो डाउट है ना. इसके पीछे एक बड़ा स्टोरी हुआ. I'll tell you 2 minutes. ठीक है? Listen. What has happened is, sir, this kind of concept of 25% came in assessment year 17-18. This kind of concept came in assessment year 17-18. And what they have done is, tax rate for assessment year 17-18 is 30%, but if turnover during 14-15 does not exceed, that time it was on 50 crores. Then they made 400. Then the tax rate is 25%. They took previous year 14-15 as base. Same like how you asked, people started shouting in the parliament, telling that 14-15 Q, bolo my lord. Then they replied, they matlab, Arun Jaitley replied. That time Arun Jaitley was there. Now he's not there, but that time he was there, no? Arun Jaitley pata hai aapko? Finance minister the wo time pe. Then he told, we are taking 14-15 as a base because that is the year when our government has come into force. So 2014 elections में बीजेपी पावर में आए, 2019 में नहीं मेरे भाई. अगले साल ये लोग 10 years कंप्लीट करने वाले हैं. बीजे कमल. ठीक है ना? So getting clarity, and this trend continued. This trend continued for assessment year 18-19. It became previous year 15-16. For assessment year 19-20, they took previous year 16-17. For assessment year 20-21, 17-18, 21-22, 18-19, 22-23, 19-20, 23-24, जो अपना assessment की बात कर रहे हैं हम, previous year became 20-20. This is 2021 then. This is not 1920. Previous year 2020. Does not exceed 400 crores. Then what is the rate, sir? 25%. समझ में आया क्या? This kind of taking the base started from there and went on going. Logic ये है इसका. तो समझ में आ रहा है क्या? So speak out. So what is the tax rate for a company? Generally 30%.
बट प्रैक्टिकली 30% पे करने वाले बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? जिसका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है उनको टैक्स रेट क्या है? 25%। कौन सा साल का देखेंगे? प्रीवियस ईयर 2021। क्या क्लियर है ना? प्रीवियस ईयर बोलते ही 22 23 मत बोलो बेटा, ठीक है क्या? आपको याद रखना है ये चीज। आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? दैट्स ऑल। दैट इज अ टैक्स रेट फॉर ए इंडियन कंपनी। दिस इज अ टैक्स रेट फॉर व्हाट कंपनी? Indian company. But one interesting note, in case of what beta? In case of foreign company, tax rate is, क्या लगता है आपको, ज्यादा लेंगे कम लेंगे? ज्यादा लेंगे। वंडरफुल, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। 40% फ्लैट। फ्लैट मतलब पूरा खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट पे ही। कंपनी है तो मतलब इंडिया वाले को 30%, इधर 40%। गलत है ना सर? गलत क्या है भाई? हम बोल रहे हैं आप लोग और बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं तो बड़े पैसे दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो इमोशंस, only sections and subsections, that's all. So let me tell you honestly, I went for a vacation to Coorg. Coorg is a place in Karnataka nearby Bangalore. So when I went for a vacation there, it's a hill station like your Lonavala. There's a place called Coorg. Sune naam? ठीक है, Coorg I went for hill station there. Nearby, while coming back, we went to Mysore Palace also. Mysore Palace naam sune? We went to Mysore Palace. Entry ticket was 50 rupees for Indians. They put a board. Entry ticket 50 rupees for Indians. For foreigners, entry ticket is $3. $3 मतलब 240 रुपए। अपने लिए 50, उनके लिए 240। अरे उनके लिए क्या है भाई? $3 ही तो है यार। 3 तो समझ में आ रहा है क्या? बोलते ना आप लोग सुपर पावर है, हमारा करेंसी बड़ा है, तो भर ना भाई बड़ा। So getting my point, everybody? No, US keeps saying this statement always. Our currency is super power. Super power, so pay more. Correct, no? And recently, few days back, our Modi ji is signing an agreement with foreign countries saying that all international transactions will happen in rupees also. That agreement is planned, I mean, almost in pipeline. Signing थोड़ा बाकी है, हो जाएगा। स्टूडेंट पूछ रहे हैं, हो गया तो अच्छा होगा ना? क्या अच्छा होगा बोलो? कुछ नहीं। आज तक हम लोग बिल रेज करते डॉलर में रेज करते थे, अभी इंडियन रुपीज में रेज करेंगे, पर जो मिलेगा उतना ही मिलता है, ज्यादा थोड़ी मिलेगा। पर बोलने के लिए बोलेंगे इट इज इन इंडियन रुपीज, दैट इज अ प्रॉब्लम। चलो, फॉरेन कंपनी क्या टैक्स रेट है बेटा? 40%। ठीक है ना? वीक आउट मतलब जितना प्रॉफिट है उस पर 25%, जितना प्रॉफिट है उस पर 30%, जितना प्रॉफिट है उस पर 40%। मतलब स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट रेट ही हो गया ये। बोलना, बोलो ना बेटा। Exactly. They are like societies. They are like as good as AJPs, so they pay tax. But practically, what happens is they don't pay tax because they take registration. Practical point I'm telling you, since you are asking, they take registration as a charitable trust. In charitable trust can also be something which is preserving a monument. They don't take they take that exemption of charitable trust and don't pay tax. I told you now, CFNL you will learn. Charitable trust don't pay income tax because they enjoy some exemptions, subject to some condition. Condition not satisfied, pay tax. Last example, in Hyderabad there is a fort called Golconda Fort. सुने क्या गोलकोंडा फोर्ट? चारमीनार, सिंहगढ़ फोर्ट, शिवनेरी, समझ गए ना आप लोग? They take registration as charitable trust and enjoy to that extent, and they don't pay tax. That's what they do. What are the conditions to be satisfied? CFNL you will learn. दोस्त यहाँ पे देखना भाई, बड़ा प्रॉब्लम है ये। बोलो, कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है। अरे क्या बात है, मैं सोचा कोई तो मुझे डाउट पूछेगा। गुड, थोड़ा क्वालिटी डाउट है ये।
मैं जवाब तो दोनों दो यार, एक मिनट. When company is newly formed, that means very clear cut that turnover is not more than what 400 crores. तो बराबर भाई 25% पे करो. अरे बराबर है ना? That's all. बोलो दोस्त. मतलब प्रॉफिट जो आएगा उस पर टैक्स पे करेंगे. कंपटीशन तो सेम है, जैसा हम इंडिविजुअल का करते वैसे ही करते. 5 heads of income, section 14, less deductions, total income, on the total income calculate tax. सेम कहानी, उसमें कोई चेंज नहीं है. जो टोटल इनकम आएगा उस पर 40% लगेगा. डन सर, क्लियर है यार? बोलना है यार. डन, लेट्स प्रोसीड. लिखो मत, रुक जाओ 2 मिनट. लेट मी टॉक अबाउट इन केस ऑफ कंपनीज. एक ही लास्ट बच गया कंपनीज, इसके बाद कहानी खत्म, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. सरचार्ज, आईको, एफको. क्या बात है भाई? इंडियन कंपनी total income is more than 1 crore does not exceed 10 crores 7%, more than 10 crores 12%. If you recollect, same like your cooperative society. बराबर है ना? समझने अच्छा हुआ, एक तो कॉमन मिला. ठीक है सर, क्लियर है? फॉरेन कंपनी total income more than 1 crore does not exceed 10 crores 2%. कोई बोल रहा है 30%. अरे ऑलरेडी 40% लूट रहे हैं ना तुम लोग. अरे फिर भी क्या यार, ये सरचार्ज तो टैक्स पे लगता है, तुम बेस पे 40 बढ़ाए ना यार. अरे आप बेस पे 10% बढ़ा दिए ऑलरेडी, सरचार्ज भी बढ़ाएंगे. अगर आप बोलेंगे 80% टैक्स, वो क्यों आएगा यार इंडिया में? हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर बोलते हैं टैक्स टैक्स टैक्स. A lot of foreign companies, let me honestly tell you, they want to come to India because according to them they get cheap labor in India, according to them. But according to us, we are happy. Whether you treat cheap or costly, for us more salary will come. तो क्या फर्क पड़ता है? बराबर है या नहीं दोस्तों? बोलो ना बेटा. But the point to be noted here is many foreign companies are scared to come to India only because of tax. Only because of tax. One time Google also gave a statement. Google CEO. बोलो यार. Wonderful. Somebody told Satya Nadella, मेरे भाई. Who is Satya Nadella? Microsoft. आप अभी तक बिल गेट्स पे ही है ना? ठीक है, आ जाओ सर. हमको वही था बीसीके में. ठीक है सर, आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? So the point is very clear. Surcharge rate is कितना बेटा? 2%. Total income is more than 10 crores 100%. 5%. अरे यार, उनको इंडिया में आके बिजनेस तो करने दो यार. हाँ बोल सुशील. The same statement. We a lot of foreign companies in US, we want to enter into India, but we are scared only because of tax structure in India, which is so very complicated. See, a lot of businessmen are scared about tax in India because it is too complicated, different provisions in different case, and it was started way back in 1961. Every year amendments have been done. Since last 60-70 years, amendments went on happening. Too many changes in the law. Correct, no? See, like Companies Act, a Bear Act book, if you buy, Bear Act, there a small Chotu Bear Act will come. Income tax, if you buy Bear Act, this much big volume will come. That will be volume 1. In my office, there is one big author called Chaturvedi and Pithisarya. वो Companies Act का income tax का नहीं हो सकता ऐसा. But let me tell you, there is an author called Chaturvedi and Pithisarya for income tax. There are about 7 volumes where there is a complete interpretation of income tax law. Every section, background, behind story, everything is covered in that. Each volume is this much size. 7 volumes are there for that, which I purchased. It's there in my office where I sit. Backside there is a cupboard and frame where that 7 books are kept like that. सबसे पहले जो मेरे ऑफिस में आएगा वो देख के डरेगा फर्स्ट और सोचेगा ये बंदे के पास कुछ तो है. पूरा नहीं पढ़ा अभी तक, आज तक भी नहीं हुआ पूरा पढ़ना. But whenever, for example, some work has come, some section is there where I have knowledge, I know everything, but I want one more clarity. I open that book, read that entire section from start to end. So like that, I completed lot of parts in that books.
बट बैठ के स्टार्टिंग से एंड तक नहीं पढ़े यार, कैसा हो सकता है ये कौन सा कोई फैमिली मैन सीरीज है या कुछ सीरीज है कि स्टार्ट से एंड तक देखते बैठते, या कोई फ्रेंड्स है या कुछ है? बराबर ना, फ्रेंड्स है तो अलग बात है, स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, बट इसमें कैसा होगा यार? सी देयर शुड बी सम मोटिवेशन टू कम, नो? When client has come, he has doubt in 4-5 sections. That 4-5 sections, top to bottom, end to top, everything will read because there is a motivation to learn. But एक साथ बैठ के पूरा सेक्शन थोड़ी पढ़ेंगे. But major chunk I covered, not everything. If I have to say rightly, 60 to 65% I read full. 7 volumes का 60-65% I read full. अरे 12 साल हो गए यार ये बन के. ये क्या रिएक्शन था? अच्छा आपको क्या लग रहा है सीए बन के 2-3 साल हो गया? लगता नहीं है. अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया. आई बिकेम ए सीए एट द एज ऑफ 21. I qualified my CA at 21, and at 21.5, that is 22 mid, I finished my CMA also. So the reason I'm like this only because I qualified in the first attempt. As quickly you pass, as wonderful life will become. Correct, no? Yes or no, sir? If you pass late, your girlfriends will become some other girlfriend. Simple. बराबर है ना? छोटे आस्क आपका क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड था ही नहीं तो अरेंज मैरिज हो गया. बाद में बताएंगे, सुनो भाई कॉन्सेप्ट को. बोला हाँ ये अच्छा है सर, बोलो ना बोलो ना बोलो ना. क्या करना है भाई? जब हम लोग तब आराम से संडे बैठते हैं ना, तब संडे को जब क्लास सुनते हैं, लास्ट में एंड में टाइम पास जब करना है तब करेंगे ये सब, क्लास के बीच में नहीं करना है, ठीक है? ये तो बताऊंगा. तो ये फर्स्ट में हो गया, इसकी वजह से आई हैव ऑलमोस्ट 12 years एक्सपीरियंस इन दिस. क्या डाउट है बोलो. See, DT के लिए some people by reference book only to solve some more problems, that's all. So that's not required because anyways I'm giving you a question bank. You solve all that questions, the job will be done. See, there are different multiple authors in the outside. Singhania, Girish Ahuja, different top authors are there for direct tax, indirect tax. It's not just for tax, even for costing there are different author books. Even for accounts there are different author books. So it's all your choice. If you feel that you have got too much of time to do it, you can do it. But my suggestion is that faculty books for every subject and their question banks would be sufficient. Because by the time you finish that only, your time will be done. Okay? So that the people buy the books only for more practice, not for any conceptual missing. That you leave it to me, that I'll take care. In that inch also will not miss out. It will be 100% only, not even 99.99999. That's my guarantee. Chalo, क्या doubt है? किधर टैक्स पे करने की बात कर रहे हैं आप? इंडिया में टैक्स पे करने की बात कर रहे हैं ना? 25% 30% है तो इंडियन कंपनी है ना यार. अरे है तो इंडियन कंपनी है यार. अब क्वेश्चन ये वापस मत पूछो मुझे, वो फॉरेन में पैसे कमा रहे हैं, फॉरेन में भी टैक्स पे करेगा क्या, इंडिया में भी टैक्स पे करेगा क्या? इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, हो सके तो आज ही दूंगा. रेजिडेंशियल स्टेटस तब बात करेंगे. आर वी क्लियर? दैट्स ऑल. दैट इज द स्टोरी ऑफ टैक्स रेट फॉर कंपनीज. गेटिंग क्लैरिटी? But one special point, more for a knowledge, आज तक एग्जाम में कभी आया ही नहीं. That is, in case of royalties, in case of what? Royalties. Royalty मतलब क्या? What is the royalty? Loyalty नहीं, royalty पूछा मैंने. Permission for taking permission for what? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. जो फोन्स होता है ना सर, phone में there is one processor chipset. 90% of the phones in India which we all are using, there is a processor which is owned by a company called Qualcomm. सुने क्या? Qualcomm Snapdragon processor, Snapdragon 4.2, Snapdragon 5.8. सुने ना? All these phone manufacturing companies pay royalty to Qualcomm for using their technology. That's called royalty. Royalty is basically for making payment for using their technology or right or some patent. Or some patent. Patent मतलब कुछ नया इन्वेंशन किया है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नया गाड़ी बनाया जो 1 लीटर के लिए 200 किलोमीटर जाता है. Example. Then one automobile company can come to me and tell Shiva sir क्या बनाया आप, एकदम तोड़, हम आपको रॉयल्टी देंगे, हम यूज करेंगे आपका टेक्नोलॉजी. समझ में आ रहा है क्या? Getting my point, everybody? One more example. Imagine Shiva Teja has done one more invention, how to extract money from money plant.
Exempt. समझ में आया क्या? That's all called patents. So on this patents, copyright, trademarks and all, people get royalty income. Now what they told is that in case of royalties and fees for technical services received by foreign companies from Indian company or from government of India, then the tax rate is 50%. In case of royalties and fees for technical services received from government of India or from Indian company as per agreement with government of India, then the tax rate is 50%. And this concept is only for the people who have signed agreement between 1961 to 1976. वो पीरियड में जो अग्रीमेंट साइन करे उनको बोले 50% टैक्स, इसलिए उसको ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं. समझ में आ रहा है क्या? So if some foreign company has signed agreement with government of India during that period, then law is telling boss please pay tax at the rate of 50%. Clear everybody? If not, what is the general rate? 40%. Sir, clear? Beta bolo na yaar. Come on, what is the tax rate for Indian company? 30% generally. But if turnover during previous year 2021 does not exceed 400 crores, then the tax rate is exactly. Somebody is asking section number क्या है सर इसका? नहीं है कुछ भी. क्यों? These are all given by Finance Act. दोस्तों बराबर है क्या? वो दोस्तों क्या प्रॉब्लम है वहां पे? बंद करो ना भाई. हुआ बंद करके दे दे वापस. सर क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? दोस्तों बोलो. चलो प्लीज पुट साइड हेडिंग टैक्स रेट फॉर कंपनी. ठीक है, खुश बैठ जाओ आराम से. लिखो अच्छे से टैक्स रेट फॉर कंपनी. ड्रॉ दिस टेबल फर्स्ट. लिखो ड्रॉ दिस टेबल. हो गया? ये तुम्हारा दोस्त का है कार्तिक? बीमार है. ओह, वेयर इज तेजस? हो गया, ऑनलाइन कर रहा है. ठीक है. और एक बंदे का नाम पता है मुझे, किसका? हाँ सर्वेश. मीत, सॉरी गीत, मीत ही था. मीत किधर है? वो भी ऑनलाइन है. हाँ हाथ उठा रहे हैं ऑनलाइन में. ठीक है. ठीक है बेटा. मतलब no, that doesn't matter. That doesn't matter in income tax. I know you learn that kind of concept in accounts, but in tax is nothing like that. It doesn't really matter whether it is normal year or abnormal year. It doesn't make any difference. Correct. Income taxes, that is only highest rate. Exceptions are your foreign company. They are all exceptions. But आप अभी तक आप जो भी देखे कॉर्पोरेट सोसाइटी, HUF, AOP, BY, AJP, सब जगह पे 30% ही था ना. फॉरेन कंपनी इज एक्सेप्शन. तो हो गया लिखना ही. क्लियर? चलो I'll give 2 notes. Note 1. Note 1. ये क्या मैं बोलूंगा. Write what I am telling. Note 1. In case of foreign companies, tax rate is the tax rate is कितना बेटा? 40%.
In case of foreign companies, tax rate is 40%. Note 2. Note 2. In case of royalties, and fees for technical services, royalties and fees for what beta? Technical services, bracket right, FTS, that's allowed, FTS. In case of royalties and fees for what beta? Technical services received from, in case of royalties and fees for technical services received from Government of India by a foreign company then the tax rate is 50%. Full stop. Such royalty or FTS, full stop, continue. Such royalty or FTS, what is FTS? Fees for technical services. Such royalty or FTS must be received from the government. Such royalty or FTS must be received from the government, or an Indian concern, 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 from government or an Indian concern in pursuance, PURSUANCE, in pursuance of an agreement, approved by the central government, in pursuance of an agreement approved by the central government, दोस्तों क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, नॉट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन. In case of royalties, agreement must be entered between, in case of royalties, agreement must be entered between 1/4/1961, and 31st March 1976. Entered between 1/4/1961 and 31st March 1976. Clear? Next line. In case of FTS, agreement must be entered. In case of FTS, agreement must be entered between 1/3/1964 and 31st March 1976. 1/3/1964 and 31st March 1976. इसकी वजह से एग्जाम में आता नहीं है बिल्कुल. समझ में आया क्या लॉजिक? वो पीरियड में जो अग्रीमेंट साइन करे, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं भाई, तेरे को 40% चार्ज नहीं करेंगे हम लोग, 50% चार्ज करेंगे. सर क्लियर है? दैट्स ऑल. टेक दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ सरचार्ज.
यस बेटा। मतलब जो रॉयल्टी ले रहा है वो रॉयल्टी दिखाएगा नहीं बोल रहे क्या? तो क्या दिखाएंगे फिर उसको? अरे पर वो तो अग्रीमेंट क्लियर जब है तो ऐसा कैसा गेम खेल सकते हैं यार? प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है because all this is for big entities. We talk about foreign companies. Generally, they don't try to play games. So ultimately, एक चीज़ तो याद रख लो कि I mean, with due respect to all of us, हम लोग ही है जो ज़्यादा गेम्स खेलने को रेडी रहते हैं. But foreign guys are very conservative. They're always very skeptical and very scared. So they always try to straight like that follow. Because उधर का violations भी ऐसा है. आपको पता था ना मेरा दुबई का स्टोरी? सिग्नल क्रॉस का पता है ना आपको मैंने? तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते यार वहाँ पे, वो लोग बहुत डरते यार. टैक्स से इतना डरते वो लोग, उसका कोई लिमिट ही नहीं. फट जाती उनको तो लिटरली. बट अपने वाले क्या है यार, ये आए जब देखेंगे अपना ही आदमी है, दो फोन लगाएंगे, आ जाएंगे अपने वाले. ये सब अपने को आदत हो गया इधर. सेटिंग, पहचान, हमारा दोस्त है, सब सबके सब ऐसे हो गए, सबके सब ऐसे हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते. और मैं जब बोलता ना कहीं टेंपल जाना है, कुछ जाना है, मेरा कोई अंकल बोलता है शिवा टेंशन मत ले, जब भी जाएगा तू फोन कर, मैं उसको फोन मारूंगा, वो लेके जाएगा तेरे को अंदर. हर जगह पे और ऐसे हो रहा है, हर जगह पे ऐसे हो रहा है. नॉट नॉर्मल. दैट टेंडेंसी वी गॉट यूज टू इट. वी गॉट यूज टू इट. यार सिग्नल रेड सिग्नल है, बंदा जा रहा है, अरे पकड़ेगा तो देखेंगे, जब तक पकड़ा रहेगा तब तक तो हम हीरो है. हाँ वही सब सब कुछ प्रॉब्लम वही है. बट देयर रूल्स आर सो स्ट्रिंजेंट वेयर पीपल कांट डू दैट. एंड नॉर्थ कोरिया इज अ कंट्री, यू नो. उधर मिस्टेक का तो कोई पनिशमेंट ही नहीं है भाई, उठा दे इसको, सिंपल. वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, वो अपरिचित टाइप है. वो सीधा बोलता है, गलती छोटा हो बड़ा हो कुछ लेना देना है नहीं, गलती तो गलती होती है, इसको उड़ा दो. स्ट्रेट. पता है ना किम? उधर तक नहीं आएगा ये, नहीं जाएगा. जस्ट पुट इट ऑफ. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? यार दोस्तों बोलो ना यार. मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आंसर देंगे क्या? राइट. कंप्यूट. सोच के सॉल्व करना, ठीक है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है ना बेटा? assuming total income is 100 crores. Sorry bhai. Assuming total income is 10 crores 1 lakh. 10 crores 1 lakh. पता है ना अपने को क्या करना है? We know what to do, right? चलो सोच के करना. और ये सब स्लैब रेट से ही है नहीं, तो फटाफट हो जाएगा आंसर. निकालो, zat 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 आना, आंसर आना चाहिए. बेटा यू आर कंफर्टेबल देयर? ओ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ब्रैकेट में लिखो टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. कौन सा चाहिए? 2021. Turnover during previous year 2021 is 390 crores. ठीक है ना? एग्जाम्पल आपको जो अच्छा सुनाई दिया वो लिख लो. 319 लिखो या 390 लिखो, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? अभी बोलो, कुछ फर्क पड़ता है तो बोलो, वापस सुनाऊंगा आपको.
नहीं ना, चलो yes guys, come on, please solve it, 2 minutes. कर दूं क्या? कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, याद है ना कुछ कॉन्सेप्ट? क्या है वो? मार्जिनल, हाँ एग्जैक्टली, सोच के करना बेटा. 10 करोड़ 1 लाख, बहुत बड़ा मार्जिनल रिलीफ आएगा. दोस्त आप करने रहे क्यों? लास्ट में क्या हुआ? सॉल्व करना बेटा. हो गया किसी का आंसर? बोलो सुजल, क्या है आंसर? 2 करोड़ 79 24. ठीक है बेटा, क्या है आंसर आपको? ठीक, मार्जिन नहीं आ रहा है क्या? 100% आएगा, नहीं आएगा कैसे हो सकता है? 100% आएगा यार, थोड़ा सा ही तो बड़ा है लिमिट से. तो मार्जिन रिलीफ आएगा नहीं आएगा यार? वही बोला वो. चलो, 10 crores 1 lakh. Tax at what rate beta? 25%, which comes to 2 crores 50 lakh 25,000. To this I will add surcharge at what rate beta? कितना बेटा? 30 lakhs. ठीक है, 2 crores 80 lakhs 28,000. बराबर है ना? If this would have been 10 crores, what would have been answer? 2 crore 50 lakh would have been your tax. सरचार्ज कितना रहता है बेटा? 7%. बराबर है ना? टोटल कितना बेटा? 2 crore 67 lakhs. एग्जैक्टली, तो मार्जिनल रिलीफ आएगा ना बेटा? एक्स्ट्रा टैक्स इज मोर देन एक्स्ट्रा इनकम, so marginal relief will be difference between extra tax and extra income. कितना है सुजल? 11,78,000. बोलो. 2 crores 68 lakhs 50,000. कितना? 10 lakhs. 2 crores 79 lakhs. That's it.
I think the question is clear. Everybody, सबको समझ में आया ना बेटा? Marginally इसलिए आया because income is little bit, we use, remember the word, slightly beyond the limit of surcharge. Beautiful. I'm sure we are clear with this question. Everyone, मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा, अब सॉल्व कीजिए, ठीक है? टैक्स में परफेक्ट हो जाना है अपने को, नो सेकंड डाउट अबाउट टैक्स कैलकुलेशन, डू इट, कंप्यूटेशन. Proceed. Can I start? बेटा बोलो. Compute tax liability in the following cases. Compute tax liability in the following cases. In the following cases. Number 1. Mr. X, aged 38. Mr. X, aged 38, having Mr. X, aged 38, having total income of 58 lakhs. Mr. X, aged 38, having total income of 58 lakhs. 158 lakhs. Bracket of which 58 lakhs. 58 lakhs. Bracket of which 10 lakhs is betting income. Betting 10 lakhs is betting income. 10 lakh betting income है. 10 lakhs is betting income and 5 lakhs is LTCG on sale of land. Question समझ गए ना बेटा? LTCG on sale of land. Clear? That's it. Question number 2. Bracket close. Question number 2. नहीं मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 2. PQR Cooperative Society. PQR Cooperative Society having total income of 40,000. Bracket of which 10,000 is on account of 10,000 is on account of LTCG on sale of private company shares. On sale of private company shares. That's it. इसको क्या करेंगे टैक्स रेट बोलो? हाँ बोलो. स्टूडेंट इज आस्किंग रिवर्स क्वेश्चन टू मी, सर एसटीडी पेड या नहीं है, बोलो ना सर. अरे कुछ भी क्वेश्चन पूछे यार आप लोग. एसटीडी कब आएगा? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स which comes only when you do trading on stock exchange, and trading on stock exchange will happen only for a public company. सोचो. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट वाला क्या था? इंडिविजुअल ना. सेकंड नेक्स्ट XYZ and Co. XYZ and Co. an LLP. XYZ and Co. an LLP. LLP sir, having total income of 20 crores. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Ching Chang, come on. Ching Chang, a non-resident. Mr. Ching Chang, a non-resident, having total income of 4,40,000. 440. 4,40,000. Next, fifth question.
ABC Private Limited, ABC Private Limited, ABC Private Limited, having total income of 12 crores. कितना बेटा? 12 crores. Bracket of which 12 करोड़ मिला इसको, ठीक है? Bracket of which LTCG on sale of building, LTCG on sale of building is 5 crores. 12 करोड़ में 5 करोड़ वही है, ठीक है ना बेटा? Is 5 crores. Full stop. Their turnover is generally about 1000 crores. Their turnover is generally above 1000 crores since last 10 years. समझ गया ना बेटा क्वेश्चन? Their turnover is generally about 1000 crores since last 10 years. कितने हो गए? 5 हो गए क्या? That's it. ये सॉल्व करो. With this, tax computation is done. चलो खत्म करो. नहीं, चैप्टर नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स खत्म कर देंगे. सोच के करना बेटा. Come on, do it. 5 minutes. Apply all the concepts. Apply surcharge wherever it's applicable. First one done.
यस सर। सब क्या फर्स्ट वाला हो गया तो बोलो यार। फर्स्ट वाला क्या है इनकम? 58 लाख है ना बेटा? 58 लाख में क्या इनकम बोला उसमें मैंने? On betting income, tax at the rate of 30% अंडर सेक्शन 115 BB। बराबर है ना? कितना है वो? 3 lakhs। और कुछ दिया मैंने? On LTCG on land, tax at the rate of 20% अंडर सेक्शन 112। कितना है? 1 लाख। बैलेंस कितना है बेटा? हाँ, 43 lakhs। We will apply slab rates। बेटा बोलो, स्लैब रेट अप्लाई कर तो कितना हो रहा है? 2.5 लाख तक नील। 2.5 से 5 लाख 12,500। 5 से 10 लाख 1 लाख। 10 लाख के ऊपर मतलब 33 lakhs। उसका 30% 9 lakhs 90,000। समझ में आ रहा ना बेटा? ऑन स्लैब रेट्स व्हाट इज द टैक्स? 11,02,500। समझ में आया ना स्लैब रेट्स दोस्तों? टोटल कितने हैं? 15,02,000। I will add surcharge at the rate of, समझ में आया ना बेटा सरचार्ज क्यों आएगा? टोटल exactly। I will also add 4%। 6611 total 17,18,860 is the answer for question number 1। How many of you got same answer? Good, good, almost 50%। बाकी लोगों का क्या करें? सुजल भाई क्या करें यार? आप 50 भूल गए, कैसे भूल जाते यार? मैं 5 अलग अलग क्वेश्चन दिया मतलब सोच के दिया ना, ऐसे थोड़ी दूंगा यार। क्या सर? 58 लाख पे नहीं आता सर। 3-4 लाख 4 लाख 5 लाख तक ही आता है। एक बार 8-10 लाख के ऊपर गया तो नहीं आता वो। 5 लाख 5 लाख तक आता है, उससे ऊपर नहीं आता। सेकंड का क्या? Second question, what did I give? What question I gave? कॉपर सोसाइटी। कोई तो कुछ और आंसर ही बोल रहा है। कितना इनकम बताया मैंने? 40,000 बस ना? इसमें क्या इनकम है और? ऑन LTCG टैक्स एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंट बेटा? अंडर सेक्शन 112 कितना है वो? ऑन बैलेंस व्हाट रेट बेटा? स्लैब रेट्स बराबर है ना? बोलो। अप टू 10,000 10% which is equal to
at the rate of 20%, which comes to 2,000. About 20,000. अरे क्या फैंसी नंबर्स आ रही है इसमें? 6,000. Total 8,000. Add H is at 4%. 320. 8320. That's it. How many of you got same answer? Good. Some friends still struggling, few of them. Come on, guys. Next one क्या? थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? एलएलपी है ना? कितना दिया इनकम मैंने? 20 करोड़ ऑफ विच कुछ है क्या? तो क्या है फिर? 20 लाख का कितना परसेंट? 20 करोड़ का 30%, 6 करोड़. सरचार्ज 12%, 72 लाख, 672. Add HSE 4%, 6 crore. Third question answer is 6 crore 98 lakhs 88,000. I am not solving it. Straightforward question है, कुछ नहीं है इसमें. फोर्थ भी चुन्नू क्वेश्चन है वो. दोस्त क्या हुआ? What's your name? ध्रुव. ओ क्या हुआ ध्रुव? चल रहा है नहीं? हाँ 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 हाँ. इनकम 4,40,50,000 टैक्स के साथ है मेरे भाई. That's it. सुजल भाई तू जीरो ऐड कर लिया क्या? Somebody is telling सर रिबेट आएगा ना सर? रिबेट आएगा क्या? क्यों? रिबेट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल. Fourth question answer is 9,880. Good. चलो लास्ट वाला खत्म करो. ओके. लास्ट क्वेश्चन क्या दिया मैंने? 10 करोड़ 12 करोड़. ठीक है.
तो मतलब 5 करोड़ पे 20%, 7 करोड़ पे 30%, 30% ही आएगा ना, because turnover is more than 1000 crores since last 10 years. हो गया दोस्त आपका? Fifth question answer is 3 crore 61 lakh 8,800. How many of you got this answer? Good. बाकी थोड़ा लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी भी, ठीक है. सरचार्ज क्या रेट है इसका? हाई फाई. यस बेटा. यस. Then surcharge 12%, then says 4%. Correct. Sir, I'm sure we have got some great level of clarity on calculating tax. अभी तक कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग. आज नहीं, I mean to say, cumulative in last 4-5 days. हाँ. फिफ्थ क्वेश्चन अलग लग रहा है क्या? अरे यार 12 करोड़ है ना बेटा, उसमें 5 करोड़ पे 20%, जो हो गया 1 करोड़, and on 7 crores the rate of which is 2 crore 10 lakhs. Total figure 3 crore 10 lakhs. Surcharge at the rate of 12%, because 1 to 10 crore 7%, about 10 crores 12%. बराबर है ना? कितना surcharge? 37 lakhs 20,000. Total 3 crore 47 lakhs 20,000. H is at the rate of 4%. कितना बेटा? 13 lakhs 88,000. 3 crore. ठीक है ना दोस्त? क्या गड़बड़ किया आप? सच्चा 20% लिए आप. टैक्स रेट ही 25% लिए क्या? अरे क्वेश्चन में दिया ना मैंने, 1000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, मतलब 400 करोड़ के ऊपर तो है ही ना. If turnover during 2021 does not exceed 400 crores, then it is 25%. If it is more than 400 crores, it becomes 30%. अच्छा 100 करोड़ लिए क्या? एक क्वेश्चन बोलते हुए मैं क्लियरली बोला 1000 करोड़. तो सबको क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? ये समझ में आया क्या सबको? Everybody, sir, can we proceed? Good. And I'm pretty sure that we got a good level of clarity on how to calculate tax. Everyone is doing here. Right. Friends, I'll tell you one very, very important, interesting, golden rule of income tax. Keep in mind always. I mean, in Income Tax Act, they never told golden rule. I'm telling you golden rule because it's an important point. Act में वो words नहीं है, golden, silver, platinum. No, I'm telling golden rule because you remember easily. All revenue receipts are, all what beta? Are taxable unless exempt. All capital receipts are exempt unless taxable. Wow, what a language. क्या बेटा language क्या है बोलो? All revenue are taxable unless
एग्जाम। जब तक हम ना बोले एग्जाम्ट है भाई वो पक्का टैक्सेबल है। कैपिटल क्या है? हमेशा एग्जाम्ट। जब तक हम ना बोले टैक्सेबल, बराबर है ना? What is taxable is covered in capital gains. Now my straight question to you, what is the difference between revenue receipt and capital receipt? एक दो एग्जाम्पल दो ना भाई, राजू के एग्जाम्पल देख। रेंट रिसीव्ड, वंडरफुल। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड, सिंपल लाइन। रेंट रिसीव्ड को मैं थोड़ा फाइन ट्यून करूंगा, जो रेंट आ रहा है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। घर बेच के जो पैसा आया, हो गया ना? In simple terms, what we always say is that revenue receipt is a receipt what we get from a source. Capital receipt is what we get by losing a source. Example, घर छोड़ दिए, capital receipt है। घर पे किराया आ रहा है, revenue receipt है। Clear है? But while making you right, what I'll make you right is revenue receipt is what we get from a source. Capital receipt is what we get from sterilization. Sterilizing means leaving. Sterilization of a profit earning source. समझ में आया क्या language? Revenue receipt is what we get from a source. Capital receipt is what we get sterilization of a profit earning source. For example, sir, imagine I got an order to manufacture 1,000 watches. Okay, to manufacture 1,000 watches I require a machine. I placed order for a machine. That fellow gave order late. That fellow gave machine late to me. Because I got machine late, I could not fulfill the order. You're getting my point, everybody? From this fellow, I charge for damages. Technically, we call it as liquidated damages. सुने ये word? I charge for liquidated damage, telling भाई तेरी वजह से मैं ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाया। तू मशीन देता था टाइम पे, मैं काम करता था। तू मशीन टाइम पे नहीं दिया, मेरा ऑर्डर रुक गया। Is it revenue receipt or capital receipt? Wonderful. Answer is capital receipt because related to a machine. That damage is related to a machine. तो सुनिए क्या ये liquidated damage फाउंडेशन में था ना बेटा? क्लियर है? वंडरफुल। चलो लिखते हैं। Please put side heading golden rule. Golden rule of income tax. All revenue receipts are taxable. Write what I am telling. Okay? All revenue receipts are taxable. All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. Unless specifically what beta? Exempt under section 10. Under section 10. Section 10 में list of exemptions are there. 10(1), 10(2), 10(3). उसमें 10(1) आपको already मैंने बोला agricultural income. याद है ना बेटा? Can you read that line what you wrote? All revenue receipts are taxable unless specifically exempt under section 10. Whereas all capital receipts are exempt. Whereas all capital receipts are exempt. Whereas all capital receipts are exempt unless specifically taxable. Unless specifically taxable under capital gains. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Unless specifically taxable under capital gains. इसका मीनिंग क्या है बोलो क्या बेटा? सुनो ना, capital gains when I go, I will teach you what are all the list of capital assets. So what is not covered in capital asset, if you sell, you will not pay tax. Example, bike, car and all. That day we were discussing, no, bike बेचे तो टैक्स आता क्या? नहीं आएगा, because थोड़े चीजों पे टैक्स नहीं है। अगर अपने को गाड़ी गिफ्ट मिलता है 50,000 का ऊपर है, फिर भी टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी इज नॉट कवर्ड इन दैट लिस्ट। गिफ्ट का याद है ना? सेक्शन नंबर बोलो गिफ्ट का। 56 to 10. वेरी गुड, गुड गुड गुड, सुपर। 56 to 10 क्लियर है ना? चलो राइट वन नोट बिलो।
Exempted incomes are those incomes. Exempted incomes are those incomes. Exempted incomes are those incomes which do not form part of, already बता रहे हैं आपको ये चीज. Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. सबको क्लियर है बेटा ये चीज? Note 2. Revenue receipts are those. Revenue receipts are those. Revenue receipts are those which are earned from a source. Revenue receipts are those which are earned from a source. And capital receipts are those. And capital receipts are those. And capital receipts are those which are earned from. And capital receipts are those which are earned from. Which are earned from sterilization. STERILIZATION or SATION. Fine. Which are earned from sterilization. Sterilization मतलब क्या? Living. Sterilization of a profit earning source. Clear बेटा? लीजिए एग्जाम्पल लिखो. Rent from a property is revenue receipt. Rent from a property is a revenue receipt. Rent from a property is a revenue receipt. Whereas income from sale of property. Whereas income from sale of property is a capital receipt. Whereas income from sale of property is a capital receipt. That's it. दोस्त समझ में आया क्या ये? Everybody? पक्का clear with this point? So what is section 115BB? 115BB. What is the rate of surcharge for foreign company? If total income is more than 1 crore, does not exceed 2 crores. 1 crore does not exceed 10 crores. 2%. More than 10 crores. अगर इंडियन है तो 7 and 12. What is the tax rate for foreign company? 40%. Indian company 30%. But if turnover during 2021 does not exceed 400 crores, तो क्या होगा? 25%. सबको क्लियर है? बेटा बोलो. Now I'll ask one interesting question. Think properly and tell me. After that we'll take a break. Listen. Sir, imagine Shiva Teja has given some service to one client. ठीक है बेटा? And work is over. After that, client asked what is the fees. I told sir fees 1 lakh rupees. कितना बेटा? But एक काम करो, आप 1 lakh मुझे मत दो. There is one NGO. NGO मतलब समझ गया ना? NGO. You do one thing. You 1 lakh rupees. You donate to that NGO. मुझे मत दो. समझे आप क्वेश्चन? काम नहीं कर रहा हूं, जो 1 लाख रुपए आप मुझे देना चाहिए आप एनजीओ को दे दो. पॉइंट समझे बेटा? Is that 1 lakh income of Shiva Teja? Should I pay tax? ठीक है, इमोशंस छोड़ दो. Should I pay tax? बोलो यार. Speak out, my dear friends. 100% answer is no. But imagine a second case where Shiva Teja
gave some service to a client. ठीक है बेटा? Client paid 1 lakh fees. Then what I have done is 1 lakh I donated to NGO. So फर्क समझे क्या? बेटा बोलो. Now is this 1 lakh income of Shiva Teja? Speak out. 100% it is income. 100% it is taxable. Whatever you donate, there is some separate deductions for donations. There you take. But income तो है ना? Taxable तो है ना? First case is called diversion of income. What, sir? Technically we call it as diversion of income by overriding title. Diversion of income by overriding title. In that case, income is not taxable because income is diverted before it reaches the assessee. Income is diverted before it reaches the assessee. So it will not form part of total income. Second one is application of income. It is spent after the amount is received, after the amount is accrued. बराबर है बेटा? और मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया क्लाइंट को, बॉस मैं तेरे लिए काम करूंगा, तो 1 लाख मुझे देना है, वो एनजीओ को दे दो. स्टार्टिंग ओनली. बिफोर इट अक्रूज टू assessee, इट इज डाइवर्टेड. समझ में आ रहा है क्या? एक क्लास का एग्जांपल दूंगा आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल. व्हेन वी गो टू सम शॉपिंग मॉल्स और लेट्स से वी हैव गॉन टू वन स्टोर वेस्ट साइड और सम शॉप, वी वेंट एट द बिलिंग काउंटर. जब पे बिल पे करते हैं हम, बाजू में एक छोटा डब्बा रहता है. ऑब्जर्व करेगा, एक स्मॉल बॉक्स गौशाला फॉर गौ सेवा. वन स्मॉल बॉक्स इज पुट. नो, in that if you want to put money you can put it. No, is it mandatory to put? Or will that fellow tell भाई इससे नहीं दिया तो तू गया, वैसा है क्या वो? And whatever money is put in that small box, it is what? Diversion of income. That is income of, that is not income of shopkeeper. Is it income of shopkeeper? Exactly. Getting clarity? Everybody put the heading now. Diversion, concept of, put the heading, concept of diversion of income. Concept of diversion of income and concept of diversion of income and application of income. Concept of what beta? Diversion of income and application of income. Is that clear? First point. Diversion of income is a case where diversion of income is a case where diversion of income is a case where income is diverted. Diversion of income is a case where income is diverted before it reaches the assessee. Diversion of income is a case where income is diverted before it, what my dear friends, reaches the assessee, and it is not included in the income of assessee. बराबर है ना बेटा? And it is not included in the income of assessee. Bracket में लिखो. This concept is known as, this concept is known as diversion of income. Diversion of income by overriding title. Diversion of income by what title, sir? Overriding title. मतलब title in this first example, title is not with Shiva Teja, title is with NGO. Second much point. Application of income is a case where 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 amount is spent
Application of income is a case where amount is spent after it reaches the assessee. Amount is spent after it reaches the assessee, and hence it is included, and hence it is included in the total income, and hence it is included in the total income of the assessee. तो समझ में आ रहा है क्या? सर इसमें आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, नॉट नाउ बट लेटर ऑन डाउट कैन कम, लिसन केयरफुली. Sir, Shiva Teja is coming to expert, taking class in expert. After I take the entire class, last day I go to Vinod sir and tell, sir आप एक काम करो, मुझे जो पैसा देना ना मुझे मत दो, मेरे वाइफ को दो. ये डाइवर्शन ऑफ इनकम होता है क्या? नहीं बॉस, अक्रू होने से पहले बोलना चाहिए. मतलब स्टार्टिंग में देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड विनोद सर दैट आई विल टेक क्लास हियर बट मनी शुड नॉट कम टू मी, मनी इज नॉट अक्रूइंग टू मी, आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स. पूरा काम होने के बाद लास्ट में बोलेंगे तो कैसा होगा? अगर ऐसा सीन है तो सब लोग ऐसे ही करते हैं. फिर सब लोग बोलेंगे मेरा पैसा जो है थोड़ा उसको दे, थोड़ा इसको दे, थोड़ा उसको दे, थोड़ा इसको दे. सब लोग बोलेंगे 2.5 लाख से नीचे है. बराबर है ना बेटा? एवरीबॉडी गेटिंग क्लैरिटी? ऑल ऑफ अस टेक अ ब्रेक. वी हैव 1-2 पॉइंट्स टू टॉक. आफ्टर ब्रेक विल टॉक. ठीक है? थैंक यू. टेक अ ब्रेक एंड कम बैक.
हो गया ब्रेक, चालू करेंगे या थोड़ी देर आराम करके लंच के बाद डिनर, डिनर के बाद? अच्छा ठीक है, चलो गेट बैक, कम ऑन. Yes, my dear friends, get back. So friends, we just wrote the concept of diversion of income and application of income. I hope we got a clarity on that point, my dear friends. Diversion of income is a case where income is diverted before it reaches the assessee and it is not included in the total income. What is application of income? Income is spent after it reaches the assessee. What is diversion of income? Income is diverted before it reaches the assessee. And is it included in total income? No. Application of income? Yes, because it is spent after it reaches the assessee. दोस्तों clear है सबको? समझ में आया ये बात? What is the golden rule of income tax? All revenue receipts are taxable. All capital receipts are exempt unless specifically taxable under capital gains. बराबर है ना बेटा? What is section 29? 210 बोलो आज. Average rate of tax. इस पे बोले नहीं ना, अभी तो बोलो यार. What is 210? 225A. ये तो बोलेंगे ही नहीं यार, कैसे बोल सकते हैं यार. चलो, anyways, last 1-2 points left in this topic. We'll close that and complete it. Yeah, and political party. हाँ, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट मतलब क्या है पूछ रहे क्या? इलेक्ट्रोल ट्रस्ट मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना, वो लोग अपना ट्रस्ट बनाते, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट, उधर से पैसे लेते, फिर पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर करते. इलेक्ट्रोल ट्रस्ट इज ए ट्रस्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. ये लोग क्या करते, बॉन्ड्स देते, बॉन्ड्स, जो पैसे दे रहे हैं उनको बॉन्ड्स देते. इलेक्ट्रोल ट्रस्ट का मतलब वो है ए ट्रस्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी and 95% of that amount of the trust is utilized by political party only. मतलब सीधा लेने की जगह घुमा के लेते. चलो क्लियर है ना बेटा? यार बोलो ना यार, प्रोसीड करें. Wonderful, that's a spirit, man. Let me define some interesting point. Income. What is income? Income. Income is an, of course. And income tax, we know that we have got 5 heads of income. क्या है वो 5 head? PGBP, capital gains, other sources. All 5 heads of income together. Correct, no? This is called heads of income. In costing, you will learn overheads. That is different. That is overhead. This is heads of income. Don't combine. That is different. Material, labor, overheads, direct cost, indirect cost, factory overheads. I know. Are clear now, everybody? Income. This word income is defined by section 224. What is 234? 229C. Maximum marginal rate. 224 talks about income, where they clearly told that income, all types of income are covered in definition of income. But some special points they have clarified. That special points I'll teach you. Point number 1. Heard of something called subsidy beta? क्या है subsidy क्या है? Oh my God, don't tell an accounting answer. Subsidy coming from government. What does that mean? क्या मिला? Rebate. अरे यार synonyms बोल रहे क्या है? Debate, rebate, discount, क्या हो रहा है ये? Exemption. Next कोई पता नहीं. बोलो, what is this subsidy? Benefit given by government. For what purpose? For promotion of respective activity. ये smart answer है ये. ठीक है. Imagine a person is setting up a factory in a backward area. Government says क्या बात है यार, ये backward area में setup कर रहा है, मतलब इंडिया को contribute कर रहा है. He is contributing to the nation. Will give some benefit to him. They say that since you are setting up a factory in backward area, we'll give you 25 lakhs. Enjoy. Clear है? Next interesting possibility, let me explain to you very clearly. सुनो ना भाई, ये स्टूडेंट्स यार ऐसे रहते हैं, इतना किताब रखेंगे तो अच्छा लगता है अपने को, और इधर से इधर तक किताब रख के फोटो लेंगे. वेट, हार्ड वर्क,
आप लोग करें क्या फाउंडेशन के बाद? ये फाउंडेशन का तो इतना ही था ना? हाँ, इंटर का थोड़ा बड़ा आएगा, फाइनल होते ही ऊपर. I also took that photo that time. There are 4 years of hard work. There is a cause. Clear, no? So done. Get back. Subsidy, my dear friends. Imagine one person is setting up a factory in backward area and is purchasing one machine. Machine value is 1 crore. But government told us 30 lakhs we will pay. You pay only 70 lakhs. Is it a benefit or not? यार बेटा बोलो, कितने का मशीन है? 1 करोड़. 30 lakhs कौन दे रहा है? 70 lakhs कौन दे रहा है? हम मतलब एसएससी. हम मतलब एग्जैक्टली. इनकम टैक्स का एक ही कहानी है, हम तुम इनकम टैक्स में बंद हो और टैक्स को जाए. चलो, गेट बैक गाइस. So point is very clear. So 30 lakhs is paid by government, 70 lakhs is paid by SSC. Now a straight question to you. In accounts or tax for that matter, when you draw your balance sheet, journal, ledger, trial balance, P&L, balance sheet, final accounts. Sune na sir? Thank you sir. When you create your balance sheet, when you create a balance sheet, matlab not your suspense account. I know your talent. Balance sheet is not telling, suspense account will tally. Obviously. And balance sheet tallying doesn't mean answer is correct. Do 2 mistakes, one debit side, one credit side, amount is same, balance sheet will tally. Correct, no? I still remember in my CA Inter, that time it was called IPCC. When I wrote my CA Inter, I still remember first problem, first paper of your CA Inter exam is your accounts paper. I went to the exam, first question was there on final accounts, non-trading concern. 15,70,000 अभी भी balance sheet total याद है यार. 15,70,000, 50,70,000 balance sheet tallied. First exam, first paper of CA Inter, first question, 20 marks question, balance sheet tallied. Imagine the level of happiness what we'll get, man. I became extremely happy. And वो टाइम पे क्या हुआ, मेरे सामने मेरे दोस्त ही बैठा था, बस आ गया था सीट्स. जनरली सीए एग्जाम में कोई कॉपी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है. द रीजन बीइंग वेरी क्लियर, अपने को भरोसा नहीं है उसके ऊपर. अरे खुद पे भरोसा नहीं, उस पर क्या भरोसा करो यार. सीए में क्या कॉपी करेंगे यार. करेक्ट, नो? बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड माय फ्रेंड, भाई क्या है आंसर, क्या है आंसर? वो बोला बैलेंस शीट टैली हुआ है, तू कर ले तेरा काम. फिर बोला टोटल तो बोल कितना आया. वो बोला 1590 बैलेंस शीट टैलीड. हमको आया 1570 बैलेंस शीट टैलीड, उसको आया 1590 बैलेंस शीट टैलीड. अब क्या करे समझ में नहीं आया. फिर सोचा शिवा 2 मिनट, जो होगा होगा, उसको छोड़ दे. अब तो दिमाग चलाएगा तो तेरा टाइम जाएगा. टाइम इज इंपॉर्टेंट. लीव दैट आंसर, कंटिन्यू द बैलेंस. दैट गुड थिंग आई हैव डन. आई डिडंट अप्लाई माय ब्रेन ऑन दैट. उस पर बैठ के तो टाइम जाएगा ना यार. एग्जाम खत्म, बाहर आए. बाहर मतलब जो एग्जाम सेंटर था, बाहर एक ग्राउंड था. एक ग्राउंड में मैं और मेरा दोस्त बैठे. वो 1590 बोल रहा हूँ, 1570 बोल रहा हूँ. थर्ड फ्लोर से मेरा दोस्त भाग के आया, बाय 16 लाख बैलेंस शीट टैली. वो इतना खुश है, 16 लाख बैलेंस शीट टैलीड. एक बोल रहा है भाई 16 लाख, एक को आया 1590, मेरे को आया 1570. बाद में 3 लोग मिलके बोले भाई एक काम करते हैं, 10 मिनट बैठ जाते इधर ही, तीनों मिलकर सॉल्व करेंगे. हम लोग तीनों मिलकर सॉल्व करें, तीनों को एक ही आंसर आया, 15,85,000 बैलेंस शीट टैलीड. और तीनों भी खुश हुए. कोई बंदा रोया नहीं तीनों में से, तीनों भी खुश. तीनों को नहीं आए ना. अगर 1590 टोटल होता था भाई, मैं तो रोता था. 1570 आया मुझे. समझ में आ रहा क्या? 16 आया तो हम दोनों रोते थे. अच्छा हुआ कि तीनों के में है, तीनों एक दूसरे को देख के. हो गया ना, हो गया, अच्छा हो गया. बट द गुड थिंग आउट ऑफ ऑल दिस इज ऑल 3 of us got exemption in accounts. सब तीनों को एग्जामिशन आया बिकॉज ऑल ऑफ अस वी हैव डन एवरीथिंग वेल. जस्ट दैट एक दो एडजस्टमेंट गलती करे, एग्जाम के प्रेशर में एक दो एडजस्टमेंट गलत हो गया. बट जब साथ में बैठ के करे, तीनों को एक ही आंसर आया, तो एक दो एडजस्टमेंट गलत हो गया. ऐसा थोड़ी है कि एक दो एडजस्टमेंट गलत करेंगे तो पूरा 0 थोड़ी देंगे. स्टेप वाइज मार्किंग है ना बेटा. तीनों को एग्जामिशन है. क्या क्लियर है? चलो, कम बैक टू माय डिस्कशन नाउ. Out of 1 crore value of machine, 30 lakhs is paid by government, 70 lakhs is paid by SSC. Now in your accounts, when you record in the balance sheet asset, my straight question to you, at what value you will record the asset?
मेरा क्वेश्चन समझे क्या आप लोग? असेट को क्या वैल्यू पे दिखाएंगे बुक्स में? स्पीक आउट. इनकम टैक्स इज शो ओनली 70 lakh. Subsidy which is related to the cost of the asset reduced from cost of the asset, and you need not pay tax on 30 lakh. Generally, any subsidy coming from the government is an income. Any subsidy coming from the government is an income. However, if subsidy is reduced from the cost of asset, then we will not treat it as income. Cost में से माइनस करेंगे, इनकम भी करेंगे तो डबल टैक्स हो गया ना इनडायरेक्टली. Exactly. Got the logic, everybody? Like this one special point. One more special point. One more special point. सुनो 2 मिनट. सुनो. One more special point. Illegal income is also taxable. ऑलरेडी बताया मैंने आपको. एक डॉक्टर हेरोइंस पे डील कर रहा था, ड्रग्स में. गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तेरे को जो करना है कर, टैक्स भर. सिंपल. Is that clear, everybody? One more interesting point. Pin money is not taxable. In exam intent question has come for 2 marks. Is pin money is taxable, and what is pin money? Student wrote pin money is taxable. Pin money is the money earned by selling safety pins. क्या नमूना आदमी है क्या रे? कुछ भी बोल रहा है, मतलब जो मन में है वो लिख देगा क्या? पिन मतलब सेफ्टी पिन. What is pin money? Any thoughts? कुछ तो सोचो यार, क्या हो सकता है पिन मनी जो मैंने बोला नॉट टैक्सेबल? क्या लग रहा है आपको? सेफ्टी पिन नहीं, कुछ और पिन. बोलो कुछ तो यार, कुछ तो थॉट. जस्ट ऐसे ही सोचो ना यार. हाँ, मुझे क्या लग रहा है पिन मनी का मतलब? मैं बोलूंगा तो वो नहीं है, ठीक है. और क्या हो सकता है? अरे यार पिन मनी का मतलब पॉकेट मनी है भाई. पॉकेट मनी. हाँ, अच्छा पॉकेट मनी लिख देते. अरे इनकम टैक्स यूजेस दैट वर्ड कॉल्ड पिन मनी बॉस. पिन मनी इज नथिंग बट ए पॉकेट मनी गिवन बाय पर्सन टू अनदर पर्सन व्हिच इज नॉट टैक्सेबल. अरे वो इनकम थोड़ी है यार. अरे आपको 100 रुपए मिला पापा से, टैक्स भर रहे क्या 100 रुपए पे? कितना भी दे सकते हैं, मतलब इनकम टैक्स बोल रहा है इट शुड बी ए पॉकेट मनी बट इट कैन नॉट बी वट एवर यू वांट. आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पापा मुझे करोड़ रुपए दिए पॉकेट मनी. पापा करोड़ क्या, पापा 10 करोड़ भी दे रहे थे फिर भी टैक्स नहीं आएगा. पापा तो रिलेटिव है, दोस्त दिया. वो दोस्ती क्या है? क्या है वो? क्या था? ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? पिन मनी इज नथिंग बट पॉकेट मनी बॉस. दैट्स नॉट एन इनकम एज सच. आर वी क्लियर? चलो प्लीज पुट. कितना में तो नहीं चलता है ना, 50,000 के ऊपर बोल तो गिफ्ट हो जाएगा ना वो. अरे पॉकेट मनी का भी लिमिट होता ना यार. अब ये मत बोलो कि करोड़ रुपए मिला पॉकेट मनी, ऐसा थोड़ी होता है यार. नहीं, एक्ट इज नॉट साइलेंट. इफ एक्ट टेल्स पॉकेट मनी दैट इज रॉन्ग. एक्ट कैन नॉट टेल 100 रुपए पॉकेट मनी. सुशील बोलेगा 100 रुपए में मेरे को क्या आता? कुछ नहीं आता मुझे. मुझे भी नहीं आता है 100 रुपए. तेरे को नहीं बोल रहा है, दोनों की बोल रहा है यार. ऐसा थोड़ी है, सबका अपना अपना है. अरे बराबर है ना? बोल. अरे डिपेंड करेगा, इसलिए एक्ट डिफाइन है क्या पॉकेट मनी कितना है. 50,000 के ऊपर तो गिफ्ट हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा ना यार. अरे पॉकेट मनी मतलब आप लॉजिक पे तो सोचे, पॉकेट मनी क्या हो सकता है? 1000, 2000, 1500, 200 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए. मैं इसलिए बोला तब से कि अंबानी के बच्चे तो पॉकेट मनी डिफिकल्ट होता है, इसलिए एक्ट ने बोला पिन मनी इज नॉट टैक्सेबल. बट एक्ट नेवर टोल्ड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पिन मनी. अब तो बोल रहा अंबानी के बच्चे को, अंबानी के बच्चे को कौन देगा पॉकेट मनी? तो बापू ने दिया ना. बापू दिए तो गिफ्ट पर रिलेटिव हो गया ना. अगर तुमको जितना बोलना है बोलो, फिर भी गिफ्ट हो गया ना, रिलेटिव एग्जम्प्ट हो गया ना यार. क्यों तू पड़ा है आकाश अंबानी, अनंत अंबानी के पीछे? शादी हो गया दोनों. आयशा अंबानी, उसका भी हो गया ना शादी. बोल क्या है तेरा प्रॉब्लम, बोल. अरे एक्ट इज साइलेंट अबाउट हाउ मच इज पॉकेट मनी. सो इफ यू टेल 1 crore, it cannot be ideally pocket money. If you tell 1 crore, it becomes like a gift. If it's coming from relative, it is anyways not taxable. Not from relative, it is taxable if it is more than 50,000. बराबर है? Speak out. Next point. Sir,
हाँ वो गिफ्ट ही हो गया ना। अरे चाचा से आया तो बोलो चाचा, चाचा भी रिलेटिव है अपना, बड़े पापा भी रिलेटिव है, रिलेटिव में कवर होते हैं। अरे एक्चुअल का जो बिजनेस का इनकम है वो तो टैक्स भरेंगे ना यार, उसके बाद ही तो गिफ्ट करेंगे, मतलब वो भी पार्टनर है क्या? सी, इज बिजनेस रन as a sole proprietor or business run as a partnership firm? That you tell answer. Then partnership firm means firm will pay tax. After that, they'll divide the profit between partners. And I already told you that profit earned by the partner from partnership firm is not taxable because firm already paid tax. तो दो बार टैक्स क्यों आएगा? And two transactions are different transactions. बराबर है ना बेटा? Everybody? Next point. अरे मेरे को बोलने दो यार, सुनो, surplus from mutual activity is not an income. Example already I told you, Lions Club, Rotary Club. अपने क्लब बनाए, सब लोग पैसे दिए, थोड़ा जमा हो गया, वो अपन पार्टी करे, जो बच गया वो इनकम टैक्स पे करे, प्रॉफिट है क्या? क्या है वो? सरप्लस, अगले बार पार्टी में काम आएगा, बराबर, एक डेजर्ट आएगा एक्स्ट्रा। क्या यार बोलो यार, चलो लिखते हैं अभी। किसमें? आई से डजंट पे टैक्स, मेंबर्स, इट्स एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ओनली, नो, फिनिश। Mutual activity, joint ownership is different, mutual activity is different. Mutual activity is a case where it's like association form where all members are paying membership fee, and for that membership fee facilities is given to members, whatever balance is left out is surplus. Example, apartment societies association, not joint ownership. 70 दिखाएंगे, मतलब 70 पे डिप्रिसिएशन लेंगे इनकम टैक्स में, तो इनकम हो जाएगा, वो पूरा इनकम हो जाएगा। वॉट एवर सब्सिडीज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट वो पूरा इनकम है, सब्सिडी जितना गवर्नमेंट में मिलता है पूरा इनकम, पर जो असेट कॉस्ट में से माइनस करे उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। चलो प्रोसीड बेटा, पुट द हेडिंग इनकम, सेक्शन, सेक्शन नंबर बोलो मेरे भाई, 224। फर्स्ट पॉइंट, income includes, income includes क्या लिखा? income includes all types of receipts, income includes all types of receipts, all types of receipts earned by an assessee. Income includes all types of receipts earned by an assessee. Income includes all types of receipts earned by an assessee, which could be, which could be, which could be regular, which could be regular or casual. समझ में आ गया ना बेटा? कैजुअल एग्जाम्पल, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, बट नॉट स्पोर्ट्स। डन, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, एनी सब्सिडी और ग्रांट, any subsidy or grant, any subsidy or grant received by an assessee, any subsidy or grant received by an assessee, any subsidy or grant received by an assessee from the government, any subsidy or grant received by an assessee from the government shall also be regarded as income. Any subsidy or grant received by an assessee from the government shall also be regarded as what beta? Income. Full stop. However, comma, if such subsidy or grant
if such subsidy or grant is reduced from, however, if such subsidy or grant is reduced from, is what beta? Reduced from cost of asset. Is reduced from cost of asset. Then such subsidy shall not be regarded as income. Then such subsidy shall not be regarded as income. Clear, no? Such subsidy shall not be regarded as income. Next point. Illegal income. Illegal income is also taxable. Illegal income is also taxable. Next one. Next point. Pin money. Pin money is not regarded as income. Pin money is not regarded as income. दोस्तों क्लियर है? Next point. Surplus from mutual activity. Surplus from mutual activity. Surplus from mutual activity is not regarded as income. Surplus from mutual activity is not regarded as income. Example, clubs, CLUPS, clubs, associations, etc. Clubs, associations. Clubs, associations, etc. That's it. Is that clear? Which section all this? 224. So friends, what is section 27? 28, 29, 210, average rate of tax, 225A, 224, 229C, maximum marginal rate, 231, 234, section 3, section 4. Exactly. I'm sure we got clarity on these points. First, let me tell you one point here. That is, in first chapter we had so many section numbers because it is a basic concepts. But not just basic. I taught you a lot of advanced discussion in terms of giving you a holistic understanding of what income tax is all about. That's why I took so much time from you in teaching you the basics, because they are very, very important and the foundation and the pillars for the next coming days. That's why I took so much time from you. Are we clear, everybody? But from next chapter onwards, every chapter, hardly you might get 7-8 sections or 10 sections maximum. Unless a topic like PGBP capital gain, there you will find more. Are we clear? Open your material once. I'm seeing some friends are maintaining only a small छोटू book of 100-150 pages. उतना छोटा book खत्म हो जाएगा 3-4 चैप्टर में. तो देख लो, नेक्स्ट बुक जो लेंगे थोड़ा बड़ा बुक ले लो, आसान हो जाएगा. ठीक है? Can we look at the material? Did we open the material? चलो open page number 1. Basic concepts. बेटा pillars of democracy हो गया ना बेटा? चलो बोलो, what are the 5 pillars? Let's revise. Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. Done. उसके बाद बेटा हम लोग ये बात कर रहे थे, आर्टिकल 265, इसको अंडरलाइन करो. No tax shall be levied or collected except by authority of law. बराबर है बेटा? And next point, Income Tax Act 1961 came into force on 1st April 1962. बराबर है? Now let's read the third point. The act is amended by the Finance Act from year to year based on budget presented by the Finance Minister in the Parliament. We know the procedure. Budget becomes Finance Bill. Then bill is signed by President. It becomes Finance Act. मतलब बिल से पहले लोकसभा राज्यसभा पास होते ही बिल, साइन होते ही एक्ट. समझ ना बेटा? माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर,
but I'm revising just from the material once again so that I can start second topic. Then उसके बाद tax. First point underline करो. Tax is a compulsory fee charged by government, and the taxes are basic source of revenue for the government. And first to the class last Monday we discussed that government का major खर्चा क्या है? Infrastructure, defense, the big cost of the government. For that they are collecting all these taxes. बराबर है? Next, ये table याद है? Union list, state list, concurrent list. Come on, what are the types of taxes? Direct tax and indirect tax. Bolo, what is direct tax? It's a tax where impact and incidence is on same person. Indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. So tell that words only. Don't use the word directly, indirectly and all. Clear है बेटा? Highlight करो उसको, highlight करो, underline करो, कुछ तो करो उसको. Impact and incidence. Clear है ना? Next page. Entry number 82. बेटा याद है? It's income tax. And 83 is customs, only for knowledge. Remember only 82. That is important for us. And tell that statement what I told you. Entry number 82 of Union list of 7th schedule to Article 246 of the Constitution has given power to central government to levy income tax. एक और बार last. Entry number 82 of Union list of 7th schedule has given power to central government to levy income tax. बराबर है? Next. Shared with states का meaning क्या है पूछ रहे क्या? See what happens is income tax, central government is taking the money, no? Out of that some amount they will give to the states based on how much money has come from that state. Not necessary that how much ever income tax is coming from Maharashtra, same amount of income tax should come from Kerala. Highest income tax is coming in India from Maharashtra only first, because Maharashtra is the financial capital of India. No doubt about it. Highest revenue first is coming from Maharashtra, then is coming from Gujarat, then is coming from Telangana. Clear, no? So whatever amount is coming from that state, थोड़ा states को देते वो लोग. कितना देते क्या देते अपने को लेना देना है नहीं. And government will decide year on year how much to give based on their policy decision making. Next. Union, sir, ये तीनों पॉइंट सिर्फ नॉलेज के लिए सिर्फ देख लो बेटा. Union government cannot levy what? Excise duty on alcohol, liquor for human consumption. Opium, Indian hemp, narcotic drugs. Only state government can levy tax on this. Sir, state government का खतरनाक पैसे है sir alcohol liquor में. Huge money they get. In fact, in Goa, alcohol liquor is cheap only because in Goa the state tax is less. इसलिए alcohol cheap है. Manufacturing cost कम नहीं है उधर. Tax कम है. समझ में आ रहा है क्या? So let me honestly tell you, Telangana government is making huge revenue from alcohol liquor. Tremendous. मतलब वहाँ पे तेलंगाना में बहुत ज़्यादा लोगों को शौक है. सैटरडे संडे है मतलब खत्म. नो डाउट अबाउट इट. ऐसा बरसेगा बारिश. You're getting my point? I mean, there is too much of that culture which is going on. Not that people are crazy and mad about it, but there is too much of culture of alcohol liquor which goes on there. इधर भी कुछ कम नहीं है, but वो लोग बाप है थोड़े. समझ गए ना तो? बस. Next, surcharge are not shared with the state. वो सेंटर रख लेते. Next, HEC is retained by what? Union government. HEC क्या है? Health and? That's it. Entry number 46, agriculture income pay tax. We have a chapter called agricultural income. I will teach you how government is indirectly taxing agricultural income. मतलब अगर एक बंदे के पास सिर्फ agriculture income है तो टैक्स नहीं आएगा. दोनों है तो कुछ तो है. वो क्या है हम पढ़ेंगे. ठीक है? Next, GST is levied by center and state together. Dual GST model. ठीक है बेटा? आप लोग होटल का जब देखिए क्या CGST, SGST, that's called dual GST model. Center and state together. आपके रिसिप्ट पे भी है ना CGST, SGST है ना बेटा? चलो, स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स बोलो भाई. व्हाट आर द 5 सोर्सेस? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. बराबर है? इंडिया का डेफिनेशन है 225A. फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, income tax rules, CBDT, circulars and notification. And see below one note,
The rules and regulations enacted by what, sir? CBDT is called what legislation? Subordinate legislation. That means government has given power to CBDT to issue the rules, circulars and notification. Highlight that word, please. Once again, highlight that word. Highlight this statement. So who gave power? Government gave power to CBDT. What is CBDT full form? Central Board of Direct Taxes. Same way, government gave power to MCA to regulate Companies Act. Clear? Yes. That's not required for us. We are sufficient only with seabed and subsoils. Because there is an act called, that's actually an act. There's an act called Territorial Waters Continental Shelf EEZ and Other Maritime Zones Act 1976. ये पूरा एक नाम है जो अपने को जरूरत नहीं. That's why I didn't tell you that. In India, there are thousands and thousands of acts in India. For everything, there is an act. You want to do something? Contract Act. Do you want to do something? Still Contract Act. Business करना है partnership में? Partnership Act. LLP बनाना है? LLP Act. Company बनाना है? Companies Act. Circulars notification. Then judicial pronouncements. Last point underline, highlight it too. Decision of High Court will apply in respective states. बताया था already? Friends? Yeah. Key points. In key points, we know that this point already we know. Tax rates are given in Finance Act as well as Income Tax Act. Income Tax Act, we have got sections like 111A, 112. पता है बेटा? And in Finance Act, we have got individual firms, BOI tax rates. Sir, clear? Next point is very, 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 very important. Our entire second chapter is based on next point only. What is the next point? For charging tax on income, residential status of a person is taken into consideration and not citizenship. We don't care which citizen you are. We are only concerned with residential status. Second chapter, we'll talk. Today I'll give introduction to that. Don't worry. Next. Finance bill. Once president signs, what will happen? Finance Act. Next. If any term is defined in the Act, then what will you do? Refer the Act. If it's not defined in the Act, refer what? General Clauses Act or refer dictionary. वही तो करते ना हम लोग. किसी चीज का एक्ट में डेफिनेशन है तो एक्ट में देख लो, नहीं है तो किधर देखते? डिक्शनरी. CBDT issues what? Notification circulars, and they also prepare what? Income tax rules. CBDT circulars are what in nature, beta? And where there is ambiguity in the law. Ambiguity means doubtful. Friends, are you highlighting along with me? Next, definitions. Beta pata hai? Assessment year, previous year. Assessment कौन सा सेक्शन है बेटा? 28. नेक्स्ट assessee का डेफिनेशन याद है? 27. यार दोस्तों 231%. बोलो बेटा कौन सा असेसमेंट का लिख लो ना सर. ये देखो फैमिली मस्त दिख रहा है. Hindu undivided family. I think you learnt about this law called दया भागा law, मिताक्षरा law था कि आपको फाउंडेशन में? अच्छा ठीक है. एक्चुअली क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड दया भागा मिताक्षरा लॉ, जस्ट फॉर नॉलेज. एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा. मिताक्षरा लॉ इज देयर एवरीवेयर इन इंडिया, बट दया भागा इज देयर इन वेस्ट बंगाल एंड असम, which says that person cannot acquire right or share in the property by birth as long as head of the family is living. Head of the family is called what? जो भी बंदा अभी नया आया, he will get right only after father dies. But मिताक्षरा law says, भाई तू जब से आया ये तेरा दो तेरा, याद है ना वो मूवी? हाँ, तीन तेरा तीन मेरा. That's, you know, acquire the right or share in the property by what? Birth. Highlight that word, birth. Obviously we'll follow mitakshara, man. And once upon a time in HUR there was a nonsense saying that daughter does not have equal right. But I already told you a few years back, amendment has been done where they told daughter has got equal right that of a. You're getting my point? So let me tell you, my grandfather, my mother's father, he passed away
almost about 10-15 years back only he passed away. When he passed away, his properties will come to the children. Correct, no? There is one mama for me and one masi for me. My mother is the eldest. She has got one sister, one brother. So my mama came to my house to take one signature, which is called relinquishment deed. Relinquishment means giving up the right. Tomorrow if my mama is selling the property, my mother will not have any right to claim the property. समझ में आया ना? My mother before signing, she asked my father. He is asking like this, should I sign or what should we do? कुछ भी जरूरत नहीं अपने को sign करो. You getting my point? If my mother says I will not sign, I also want share. My mama cannot do anything. He has to give the share. Because the property is not self-acquired property of mama. It is property acquired by my nana ji. If it is self-acquired by my mama ji, my mother cannot ask. In simple terms, in my father property, my sister and me, both of us have got equal rights. But if I buy a property using my own capacity, using my own money, my sister cannot demand. लॉजिक समझे क्या? हमारा घर पे बिंदा से, बट कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना आप लोग, राइट? Where property admits of a physical division, then if a physical division is made, it is regarded as what? Partition. To call it as partition of HUF, divide करो properties. बहुत बार होता है ना सर? There used to be generations where people used to be staying together in families. Now most of them became nuclear families. घर पे 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग. पहले तो 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग, क्या क्या नहीं यार. समझ में आया क्या सर? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट मंथ मेरे मासी का शादी है. मासी का, सही सुने आप? नेक्स्ट मंथ मासी का शादी है. मासी का शादी इसलिए बिकॉज माय नाना जी हैज गॉट 6 ब्रदर्स, 7 ऑफ देम इंक्लूडिंग हिम. मतलब 6 छोटे भाई लोग हैं. सबसे बड़े मेरे नाना जी है. सबसे छोटा जो है ना, उनका बेटी का शादी है जो मेरे से छोटी है. आप समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? रिलेशनशिप समझ गए क्या? शी इज मासी ओनली नो फॉर मी. तो मेरे मासी की शादी को आई विल गो विथ माई वाइफ एंड माई किड. पहले जनरेशन ऐसा था यार, लोग बनाते थे क्रिकेट टीम्स, एक्स्ट्रा प्लेयर्स, व्हाट नॉट, रिजर्व्स. Now people have got that mindset where 2 kids, 1 kid. People have got that mindset of population. Already 140 crore हो गया. Our most populated country. Already we crossed China. You know that, no? Technology में नहीं मेरे भाई. Population में India has shown the talent. ठीक है ना? सर ऐसे ही थे सर, वो टाइम पे ऐसे ही था. मतलब बड़े families. You guys also would have, no? Your fathers, brother, grandfather, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं. 10 लोग हैं क्या? 8. साथ में हम परेशान हो रहे हैं. चलो, can I proceed? The biggest joke is what I'll tell you. For my wife, what will my masi become? सासू माँ ही है ना. वो उनके मतलब मेरे ससुराल वालों को वो पूछ रहे किसका शादी है. मैं वाइफ इस मेरे सासू माँ का शादी है. तो कितना अजीब लग रहा है यार सुनने में, कितना अजीब लग रहा है सुनने में, मेरे सासू माँ का शादी है. वैसे तो सही है, वो स्टेटमेंट तो सही है, बट वो सुनने में कैसे लग रहा है यार. चलो गेट बैक बॉस. या फिजिकल डिविजन ऑफ इनकम without physical division of property producing income shall not be deemed to be partition. To call it as partition, divide properties, not just income. Properties divide हो गए, भाई लोग separate हो गए, it's called what? Partition. Example, my father has got 3 more brothers. There are 4. 4 of them दादाजी के नाम में properties थे. 4 लोग divide कर लिए properties. That's called what? Partition of HUF. Done. Company, ऐसे डेफिनेशन नॉलेज के लिए दिया मैंने आपको. डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी. HUF में बिजनेस होना कंपलसरी है क्या पूछ रहे? नहीं. या कैसे बनाए, कुछ तो होना चाहिए ना यार. अरे फैमिली का बिजनेस मतलब, सी either you have to run the business as sole proprietor, or you have to run as partnership firm, or you have to run as company.
अब कुछ भी नहीं कर रहे मतलब क्या बोलेंगे हम, एओपी बीओआई एजेपी लेके आएंगे। एचयूएफ का अपना पैन कार्ड होता है बॉस, एचयूएफ का अपना पैन कार्ड होता है जिसमें फोर्थ लेटर विल बी एच, अपना पी है ना इंडिविजुअल का, उसका एच है, कंपनी का सी है, तो एचयूएफ का अपना पैन कार्ड होता है। गलत है वो, हाँ वो चलता है, मेरे पास दो है ना बर, मेरे पास दो है। आई मीन आई हैव गॉट वन पैन कार्ड ऑन माय नेम, वन मोर पैन कार्ड ऑन एचयूएफ नेम। मेरा पैन कार्ड मेरा फोटो है, एचयूएफ पैन कार्ड में फोटो नहीं रहता, पूरा फैमिली का फोटो थोड़े लगाएंगे, नहीं। हाँ बोलो ना। No, you cannot directly call a property HUF property. What they told in the law is, only for knowledge since you asked, there is one person X who purchased a property. X did not write a will and he died. Then that property will become HUF property. मतलब as good as भाई साहब बड़े बड़े सब चले गए तो उनके जितने भी बच्चे हैं सबका हक है वो प्रॉपर्टी का, मतलब वो प्रॉपर्टी बन जाएगा HUF प्रॉपर्टी। समझ गया? और जो फैमिली में सबसे हेड जो रहता बड़े, उनको हम बोलते क्या, करता। और अभी जो प्रॉपर्टी में जो रेंट मिल रहा है वो किधर दिखाएंगे, HUF रेंट। समझ में आ रहा है दोस्त? पक्का क्लियर है? बोलिए। समझा नहीं? अच्छा, करता महाराष्ट्र में, so it depends upon where exactly is the HUF place, that's the only thing. HUF जब पैन कार्ड लिए तो एड्रेस दिए होंगे ना, जो पैन कार्ड में क्या एड्रेस दिए वो देख लेंगे हम लोग। करता उधर है तो फैमिली पूरा इधर क्या कर, अरे तू टेक्निकल डाउट मत पूछ मेरे भाई। चलो कंपनीज, हाँ HUF का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन नहीं होगा, HUF का पार्टीशन हो जाएगा। अभी वही तो बात करें हम लोग। See, my own case, I'll tell you my father's case. My father had got 4 brothers. My dadaji had got some 4-5 acres of land. He died without writing will. तो सबका इक्वल हक हो गया ना। उसके बाद 4 भाई लोग डिवाइड कर लिए, 4 भाई लोग डिवाइड कर लिए, तो क्या हो गया वो, पार्टीशन। सर क्लियर? Practically we are not able to get to see much of HUF these days because people are not much concerned. पहले बहुत एग्जाम्शन मिलता था, अभी कितना फर्क पड़ेगा HUF है तो 2.5 लाख तक वो एग्जाम्शन मिलेगा, बराबर है ना दोस्त? बोलो। नहीं नहीं वही फॉलो करना है, वही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता ये सब। ठीक है, आर वी क्लियर? कैन वी प्रोसीड? चलो, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, पीओआई, लोकल अथॉरिटी। Local authority is something like municipal committee, district board, body of commissioner, other authorities entrusted by the government with the control and management of what fund? Municipal fund, right there, municipal corporation. Municipal corporation. In Pune, they call no PMC. That's it. Next. A local authority is taxable, see this point, is taxable in respect of that part of its income which arises from any business carried on by it. Practically we don't see this because they don't carry on any business. See next line. But income from supply of any commodity or service within its own is not taxable. Sir, local authority, municipal corporation वाले क्या देते सर अपने को? ज़्यादा से ज़्यादा देते पानी देते, और क्या देते? डस्टबिन देते, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, वही ब्लू कलर। इनकम अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड इट्स एरिया इज व्हाट? एग्जेम्प्ट। दिस इज मोर ऑफ ए कॉमन सेंस पॉइंट यार। जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रहे उस पर जो पैसे ले रहे उस पर इनकम टैक्स थोड़ी ना भरेंगे यार, बेटा बराबर है? एवरीबडी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, एजेपी एग्जांपल, बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज। व्हाट इज द बार काउंसिल? What is the bar council? Like how we have got ICI, for lawyers it is bar council. Clear hai? Done. Section 4.
चार्जेबिलिटी सेक्शन हो गया ना. 224 इनकम, इसका मेजर पॉइंट्स लिखा है मैंने आपको. ये नोट याद है क्या? एक टाइम पे एकदम कड़क बंद हो गया अभी तो. ठीक है. अदर पॉइंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्शन ऑफ इनकम. बेटा बात करें आज हम लोग. दोस्तों बोलो. नेक्स्ट पेज, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट. आर वी डन विद दिस? Revenue receipt is what we get from a source. Capital receipt is what we get from sterilization of a profit earning source. बराबर है. सेक्शन 4, 4 बड़े सेक्शन का एक्सेप्शन. देखो भाई, शिप जा रहा है, इसमें एक 7.5% का पॉइंट दिखेगा आपको. हाँ वो हाईलाइट करो यार. फिर याद है ना ये पॉइंट? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बोलो? पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. जा रहा है पैक करके. नेक्स्ट, एओपी, बीओआई, एजेपी फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और पर्पस. पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. लास्ट वन. सर ये लास्ट पॉइंट देखो ना, इसमें जो मैं बताया था आपको ऑलरेडी. इन द फर्स्ट 4 केसेस dealt above, tax is charged in the previous year itself, but in last case it is discretion of AO. आपको याद है तो मैं लिखा था आपको AO shall, AO may. फर्स्ट 4 को लिखे थे AO shall, लास्ट पॉइंट को लिखे थे AO may. दोस्तों, सर every point I already taught you, but I'm just taking you through the material so that you will feel comfortable. हाँ, तो बाद में आपको लगना नहीं ना यार ये रह गया, इसको भी देखना बाकी है. क्यों वो फीलिंग? नो फीलिंग्स, इमोशंस. वंडरफुल. अनडिस्क्लोज इनकम याद है बेटा? ये टैक्स क्या रेट है बेटा? 60%, 25%, 4% इफेक्टिवली. दैट्स इट. बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, डिडक्शंस कुछ भी नहीं आता. क्लियर है ना? नेक्स्ट, ये टेबल आपको पढ़ाया था मैंने. फर्स्ट, डिटरमाइन रेजिडेंस स्टेटस, classify to 5 heads of income, compute under 5 heads of income, compute GTI, set off the losses, do clubbing of income, reduce deductions, get total income, calculate tax. टमाटर ये लिखे ना सर हम लोग ऐसा लिखे थे, इसमें ऐसा है. कॉन्सेप्ट तो वही है ना यार. ये सेक्शन नंबर क्या है? 14, heads of income. Speak out. भाई लोग ये पॉइंट देखो दोस्तों थोड़ा. इफ अ पर्टिकुलर नॉन एक्सेम्प्टेड इनकम इज नॉट कवर्ड अंडर फर्स्ट 4 हेड्स, इट ऑटोमेटिकली कम अंडर इनकम फ्रॉम. बराबर है ना? अगर एग्जेम्प्टेड है तो लेके मत आओ. इफ इट्स एग्जेम्प्टेड इट इज एग्जेम्प्टेड. इफ इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड एंड नॉट कवर्ड अंडर फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम, देन ब्रिंग अंडर इनकम फ्रॉम. दैट्स इट. एग्जम्पशंस, डिडक्शंस बेटा याद है ना? डिडक्शंस तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा है वैसे तो. इधर ये चैप्टर में है ही नहीं, आप देखेंगे तो आपको जीजीबी बताया, जीजीसी बताया, टीटीए बताया, टीटीबी बताया. 56 to 10 ढूंढ लो, फर्स्ट चैप्टर मिलता ही नहीं. 56 to 10 आपको ये सब पढ़ा है मैंने आपको, बिकॉज दे विल ऑल कम इन द फ्यूचर, बट वी आर रेडी फॉर द फ्यूचर. यस. टोटल इनकम. नेक्स्ट, टैक्स रेट्स, ये तो पता है भाई अपने को. चलो दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट पेज यू टर्न. नेक्स्ट पेज यू सी. There's something called individual HU of what scheme, sir? New scheme. I'm not going to teach you that today, my dear friends. I'll teach you when time comes. We know that there are slab rates of 2.5 lakh nil, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, about 10 30%. There is something called alternate tax regime given under section 115 BAC. Which section? 115 BAC. Alternate tax rates are there. But law told very clearly this alternate tax rates will apply provided you don't take deductions, provided you don't take some exemptions. वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, फिर तुम्हारा टैक्स रेट कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? आई एम नॉट टीचिंग यू दैट नो, बिकॉज फर्स्ट आई टीच यू वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो बोला ना, वो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो पढ़ेंगे पहले. उसके बाद इसका दिमाग में बैठेगा कि ऑल्टरनेट रेट क्या होता है. तब आप खुद बोल सकते हैं कि alternate rate अच्छा है या नहीं. Correct, no? To decide whether alternate rate is good or bad, we have to understand what all will not come if I go to alternate rate. Correct, no? Strictly speaking, bad only, but which case good also I'll tell. ठीक है ना?
इसका रेट थोड़ा अलग दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है ना बेटा? बाद में देखते हैं, आप भी नहीं। चलो ये तो हो गया, रिबेट वाला कहानी हो गया, पार्टनरशिप फर्म का हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। नीचे एक नोट लिखा, बट यहाँ पे लिखा डेल्टिन ये फाइनल, लास्ट में बताऊंगा आपको, लास्ट ऑफ द क्लास आई टीच यू दैट। कंपनीज बेटा 400 करोड़ तक है तो 25%, इन अदर केस 30%, अदर इनकम 40%, बट ये रॉयल्टी एफटीएस का 50%। दोस्तों मैंने आपको लिखा था ये एग्रीमेंट वाला भी कहानी आज ही लिखे थे बेटा, और ये नोट का फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आई टीच यू लेटर, बिकॉज दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट टैक्स रेट। Alternate rates you will understand only when you understand what will not come in alternate rate, ठीक है ना? एक लास्ट में एक टेबल बनाया आपको ये फर्स्ट चैप्टर में, वो टेबल आपको तभी समझ में आएगा वो पढ़ने के बाद, ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट सरचार्ज। दोस्तों ऑलरेडी वी प्रिपेयर टेबल्स फॉर सरचार्ज, ये पॉइंट पढ़ो बेटा। इफ टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड, एनी इनकम चार्ज 111A 112 सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड, बराबर है, HEC 4%, मार्जिन रिलीफ पता है अपने को दोस्तों। उसके बाद जो ये टेबल है ना बेटा, दिस टेबल वी विल अंडरस्टैंड परफेक्टली ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट वी विल नॉट गेट इन अल्टरनेट रेट, देन वी विल सी दिस टेबल। मतलब टेक्निकली वी कैन लर्न दिस ओनली आफ्टर 1.5 month, समझ में आ रहा है? Next, computation of total income and tax liability. Take all 5 heads of income. What do we get? Gross total income. Some student is asking, sir, what is dharmada? Dharmada is something like direct charity. In income definition, one word has come, dharmada. Student is asking, what is that word dharmada? I'll tell you the page number. Hold on. Page number 9 पे एक word है, dharmada not taxable. That is as good as your charity. That is example your gaushala. Gaushala for go seva they put a box, no? That's like dharmada. Clear? Done. कहाँ पे हम लोग? 21. हाँ चलो भाई, 5 heads of income, salary, HP, PGBP, capital gains, other sources. Total क्या बोलेंगे? Gross total income less what? Deduction of chapter 6 balance total income, and that is rounded off as per 288A. Then calculate tax less rebate if applicable, add HEC less TDS, TCS, advance tax, self assessment tax. What is this? We'll learn in different chapter. Return of income chapter we'll learn. Net tax liability rounded off as per which section? 288B. Friends, yes or no? Next 112 पता है? 112A, 111A, 115BB, 115BB, 288A, 288B. सर मेरे खुशी के लिए बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? We have done all this right? Done. Questions कुछ तो पेंडिंग है यार, सॉल्व करो भाई। Compute tax level to fixed limit assuming total income is 1 crore 1 lakh. Assume 30% tax. Assume 30% tax and solve it. ठीक है ना? 30%. If question is silent, you write 30%. टेलिंग सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया, नहीं हुआ भाई? जो करे वो 10 crores 1 lakh था, ये 1 crore 1 lakh है, अलग है ना?
हो गया क्या है आंसर? 32,24,000 सेम आंसर. somebody is selling 3 crores. भाई 1 करोड़ रुपए इनकम है तो टैक्स 3 करोड़ कैसा आता भाई? You are searching for surcharge rate, my dear friend. 34, 32, 32, 24. Come on, guys. What is the figure I gave? 1 crore. Tax at what rate, beta? Which is nothing but 30 lakhs 30,000. बराबर है बेटा? We will add surcharge rate of 2 lakhs 2,12,000. Total 32 lakhs 42,100. If this would have been 1 crore, my tax would have been just 30 lakhs. So I'll definitely get the marginal relief. कितना है बेटा marginal relief? 1,42,100. Understanding, my dear friends? Everybody, sir? What is the answer? 31 lakhs. H is the rate of 4%. 1,24,000. 32 lakhs 24,000 is my final tax liability. 34 लाख कैसा है भाई? सच्चा 12% क्यों लिया? 7% तो है. यस बेटा. ऐसे कैसे आएगा? अरे कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ किया क्या? दस करोड़ से कंपेयर करो, 10 करोड़ से कंपेयर करो. 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर है तो 1 करोड़ से कंपेयर करो. और ये सर लॉजिकल एक बात बोलूं क्या? ये 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 6 लाख तक की हो सकता है. ये अगर 1 करोड़ 10 लाख ऊपर हो गया तो नहीं होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है. स्लाइटली बेटा समझ में आया गलती किधर हुआ? हाँ किधर हुआ गलती? अरे 12% है तो सेम आंसर कैसा आ सकता बेटा? ये तो मैजिक है. आर वी डन? कैन वी प्रोसीड? चलो भाई. व्हाट इज सेक्शन 27, 28, 29, 210. Average rate of tax, total tax divided by total income into 100. 224. Income. What come? Income. 225A. 231. 234. Section 3. Section 4. 87A. 288A. 288B. 172. Shipping business of non-resident. 174. Persons leaving India permanently or for long time. 174A. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. 176. 112. LTCG general rate 20%. 112A. Long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid is taxed at the rate of 10% on amount exceeding. Same case short term 111A, taxed at the rate of 15%. There is no limit of 1 lakh. Then 115BB, casual incomes. What rate? Flat 30%. BB, unexplained incomes, investment expenditure 60% plus 25% plus 4%. Effective rate 78%. बराबर है बेटा? Good. Then next section 80GGB.
company to political party. GGC, other than company to political party. TTA, interest on savings bank account for non-senior citizen, 10,000 limit. TTB, savings bank and fixed deposit for senior citizen, interest or 50,000, whichever is lower. 80C में क्या क्या पॉइंट सीखे अभी तक हम लोग? लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम एजुकेशन, प्रोविडेंट फंड, सब मिलके वंडरफुल. 80D, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, कितना है लिमिट? 25,000. सीनियर, याद है ना बेटा? गुड. नेक्स्ट सेक्शन, section 14, heads off. Good. 229C, entry number 82, income tax of union list, 7th schedule to article 246 of the constitution. Okay. Next, 56 to 10, taxability of gift if it is more than 50,000. दोस्तों नेक्स्ट और कुछ? सेक्शन 10(1) agricultural income, article 265, no tax shall be levied or collected except the authority of law. बराबर है ना? और that is new tax regime, बोला ना, alternate rate, जो अभी तक पढ़े नहीं तो उसको बाद में रखते हैं. चलो, I hope we got good light on all the sections, guys. Did we all enjoy this first topic, my dear friends? Second topic is even more interesting. I thought I'll start today, but it's okay, no problem. Tomorrow afresh, we'll start with a beautiful topic known as residential status. Don't miss the beginning. Thank you so much. Take care. Bye-bye. See you all tomorrow. Have a great start to the weekend. Thank you. बाय ऑनलाइन दोस्तों, टेक केयर. कब तक ऑनलाइन करेंगे? आ जाओ ऑफ क्लास में यार.